Good afternoon, and we are back live from the Multan Cricket Stadium. It's KP's day versus Central Punjab. They've won the toss, and no surprises, they've decided to bat first. Here is the Central Punjab team in our huddle. They've got a lot to discuss. I'm sure they've done that the night before because they played the last game. They lost it while chasing. They gave a fight, but then again, the result didn't go in their favor. The two umpires walk out. It's a bright, sunny afternoon here in Multan. The sun is not very friendly still, although we're in October, but evenings are very cool. Have a look at the teams and Shazer alongside. Good afternoon, Sikandar. Yes, well, KP has rested today Shaheen Shah Afridi, and at the same time, they've also brought, Central Punjab has brought in Bilal Asif and Ahmed Bashir instead of Sohaibullah and Irfan Khan. Interesting changes by Central Punjab today. Yeah, one for KP, two for Central Punjab. This is how they look for match 13 here at the Multan Cricket Stadium. We're talking about no surprises of winning the toss and batting first. Average score up till now has been 190, and we've seen that sides chasing have only won on 4 occasions. And sides winning the toss and batting first have, or rather just batting first, have won on 8 occasions. They are teams who are looking very good in terms of their balance in their batting. They've got finishers, good opening partnerships, support in the middle order. Some are struggling. They do have those big names, but yet to get the final results in their favor. Fakhr Zaman is looking good. He's got 2 good innings in this tournament up till now. He's opening once again, without doubt. Along with him is, of course, his captain. That's Mohammad Rizwan, who's also had a very good tournament with the bat. Couldn't really take advantage of his form against Sindh, but here he is today. Pretty confident that winning the toss, they are going to at least get 180 plus on this good batting wicket. Well said, Sikandar. Well, today, Central Punjab is starting off with Zafar Gaur. Interesting change. I think when they see Fakhr Zaman on strike, opening the innings, a lot of teams have started off with a spinner. Now, Central Punjab has made these 2 changes, bringing in the experienced Bilal Asif, who can also bat, and at the same time bringing in another pacey bowler, Ahmed Bashir, instead of Sohaibullah. Now, the way KP has been batting recently with Fakhr Zaman and Rizwan on top, they bat really deep. But Mohammad Hafiz, Rizwan, Fakhr Zaman, all have been batting really well, exceptionally actually. Action, match 13. What's it? Wide given by the umpire. Straight away, off the mark with an extra. Zafar Gaur showed some talent last night with the bat. Took the side to the last over. He's been good with the ball as well. Handy cricketer, useful cricketer in this format. Good to have him in any side. Fakhr Zaman in the power play will look to go after him. A bit of turn there for Zafar Gaur. Second wide in the over. Eye the mid-wicket area. Keep an eye on that, because he's going to try and play it with the spin. He's got a deep mid-wicket and a long on in place for Fakhr Zaman. He's getting a bit of turn here. This time we'll have to wait for the umpire. Probably wrapped on the bat. Yeah, that's a leg by. So all extras at the moment, 2 wides and a leg by. Well, as you see, Zafar Gaur just trying to bowl towards Fakhr Zaman's pads, or just limit his room area, because they want him to play long on mid-wicket area. Anything outside the off stump, and Fakhr Zaman can just slash his arms real quick and just go for a boundary. The outfield is lightning quick.
They have this left-right combination. Rizwan plays the spinner really well. It's gonna be interesting to see how Fakhar Zaman takes Zafar Gohar on. Last night, late night heroics, almost by Zafar Gohar, almost bringing the game home for Central Punjab. Not scared to flight it. Rizwan will have to keep that in mind after watching a bit of turn there from the non-strikers in. Probably like to cover the line of the ball if he wants to charge. Now this time that wasn't really, I'm sure, the intention of the ball up. It was pretty short. First runs of the bat. Athletically stopped by Ahmed Bashir, right there. Now Zafar Gohar is so far bowled a limited over. They're going to look for a big hit to end this over, Fakhar Zaman. But he's really not scared flighting the ball up in the air. Gives the charge, but finds a mid-off here. That's how he plays. They both have different brand of cricket. Fakhar Zaman likes to go after the bowling. We all know about that. He's not going to be kept quiet for long. But he has given due respect where required. This time he slogs, puts 1 foot down and gets the first boundary going of the day. Just plant that foot right at the pitch of the ball and the swing of the bat. It's just picked over square leg. As you see, that all you had to do, you knew the fielder being fine leg, square leg being up in the air for a good boundary at the end of the over. Three in the afternoon here in Multan. And Ehsan Adil has been given a new ball from the commentary box end. The third man on a deep square leg, the 2 men outside the circle. Still, you can see the offside, pretty packed. Backward point, cover, extra cover, mid-off. On the onside, you've got a short fine leg, you've got a mid-wicket, you've got a mid-on, and a man in the deep, a square leg. Comes in off the wicket. Yes, Sikandar. Ehsan's ball just skidding into Rizwan's inside edge and his pads for a single. But let's not forget, Central Punjab, this is their back-to-back games. They played last night and first off this morning, 3 p.m. game. Now, it is hot and humid out there. They had a tough game last game. So it really depends how stiff or how fresh these bowlers are to have a good performance again. Yeah, they've got to just absorb what's given to them, because it's not just this team. Many teams have played a match in the night, like Sindh, and yesterday played the first game in the afternoon. So with 6 teams, you will have back-to-back matches somewhere. But the good part is, I was just looking at the weather conditions when we moved to Rawalpindi. Today's the last day in Multan. From the 9th we start in Rawalpindi. The weather is more friendlier over there. The temperature's somewhere around 32 and 34 compared to here, where it reaches up to 38, 39. But the evenings are much cooler. It goes down to 19 or 20. So that would be good. Ehsan has started off well, just bowling a nice tight line. As you see, the ball is a little bit seaming around for a third-man single for Fakhar Zaman there. As a bowler, this is how you would want to start off, knowing that on this kind of pitch and this kind of outfield, any room that a bowler is going to give, batsmen will throw their hands at it. First 3 balls, Ehsan Adil's looking good, looking right on the money.
bowling towards his field with square leg being back and third man. Beautifully placed by Rizwan, down the ground for a straight drive for 4. Just half volley under the bat. Look at just that balance, Sikandar. He's just waiting for that ball to come onto his bat and just gone for 4. Yeah, picture perfect. High elbow, straight bat, in the safest zone to hit the ball. You can see the difference, gauge the confidence levels of these two teams. KPK lost their first match and won the remaining 3. They've played 4. Central Punjab have also played 4 games. They won their first match and they lost 3 on the trot. Similar shot, this time more leaning into it. Like an on drive, just a single. Smarter by Hassan Adil this time for pull-in, mid-on a little bit finer. Now, well said. I mean, Central Punjab is still trying to find their combination. Batsmen have been struggling a little bit. They need their main performer, Kamran Akmal, to fire off today. So the good sign with that is they got Abdullah Shafiq handling the load really well so far. But they need to win some games. Speaking of Central Punjab, well, good news for them would be that in the second leg in Rawalpindi, Central Punjab will get their regular captain Babar Azam back. 2 overs bowled, 16 for none. Up to number 6, they've got specialists in terms of batting. Iftikhar, so good and in just fluent form. Then you've got the big hitters. Wahab Riaz can hit a few. You can remember, if you remember the knock he played long back against Zimbabwe in the World Cup, saved their side from a lot of embarrassment. And later on, just recently against Afghanistan. There are a couple of fast bowlers who love to bat as well. Sohail Khan is one. And he's good at it, he's worked on it. Wahab Riaz. Can you think of any other Pakistan fast bowlers who like to bat? Not even fast bowlers. There's spinners who really have worked. Shadab has worked on his batting. Nasir Shah got a century in a test match. Down the wicket, plays it straight, but there is protection. Can he cut it off? No, he can't. That's 4. Outfield just lightning quick here in Multan Cricket Stadium. Fakhar Zaman has this go-to shot. Just hop down the pitch, hit it over the bowler's head. The ball is not spinning. And Qasim Akram has bowled a nice tight line last game, but he's off with Fakhar Zaman attacking today. Coming back to the fact, the bowlers who'd like to be considered as potential batsmen, useful batsmen. Hassan Ali is working on it. He's right now in rehab. Injuries. But someone who's really into it is Sohail Khan. He loves to bat. I think at the first class level he has batted up in the order as well. This is Sohail Tanveer, very good bat. He's batted number 3. He's got a 100 as well at that level. Mohammad Amir at one time was getting 50s for Pakistan. Oh yeah, mentioning him. Drag it from outside off stump, eyeing the gap. I remember that knock with Mohammad Amir and Saeed Ajmal. Look at that gap. Saeed Ajmal against New Zealand in Abu Dhabi. Wow, they almost took the game away. Daniel Vettori was pulling his hair.
Nicely done. That's very typical of Rizwan. Just waits for that one, and right at the end opens the face of the bat. Could have been 3 available there. Rizwan seemed very disinterested. Just knowing exactly where the fielder is placed, knowing that if he just plays it a little bit fine, he's going to get a couple of runs there. Shuffling across the wicket just to get that room, knowing that the ball is going to be outside off, and just played it for a nice late cut. Just a single to end the over. It's 24 for none. That's what happened at a toss today in the afternoon. We've seen Dew coming in the later part of the day, but still wouldn't say that toss is playing any major role here in terms of decisions, in terms of results. Picked up nicely. His protection there in the deep, and then come back for 2. It's the team that makes the least mistakes this tournament. I feel that makes the difference. Like, you're noticing drop catches, you're seeing running between the wickets. There's those small details in the cricket match that's making the huge difference, Sikandar, so far. But just being back onto the game right now, Ehsan Adil knows that he's not express pace, but all his balls have been on that nagging length, making the batsman trying to make a move himself. That's so well done. On the legs and ever ready, Mohammad Rizwan gets it over a short fine leg and earns himself a boundary. Just when I was saying that, Rizwan knew exactly where Ehsan Adil was trying to bowl and just clipped it over fine leg, square leg area for a boundary. Just smart thinking, knowing exactly where the fielders are, calculating where the bowler is going to bowl, and just hit his shot with full confidence. Pushing for second and deciding against it. This wicket is so good. All these strips, all the 4 strips that are being used, get that true bounce. You can trust it. You can go on the back foot and cut the ball from in front of the stumps. You're not scared to do that. You've hardly seen anything that's kept low. But it's been tough for the bowlers so far this whole tournament, besides Shaheen Shah, really. Giving the charge, and he will clear deep mid-wicket by a good margin. He hits it hard, Fakhar Zaman. Once he commits himself, then he goes through with the shot, and he puts all the possible force behind it. Fakhar Zaman in the mood to dance. As you see, just dancing down the track, seeing the ball, hitting the ball hard, and just a nice 6 to end this over with some momentum and getting this power play working. 3 overs for 37, they're on 4th over in. KP again is on a flying start with both their batsmen looking really good. "13 of the over already." That's the magic of power play. If you can get one more in, you'd be more than happy. KP 38 for none. We're just in the 4th over. There's almost 10 and over here. They had Qasim Akram bowl 4 on the trot in the power play last time. And Usman Khadir has bowled well for them with a lot of variation yesterday, as we saw.
Fakhr Zaman will keep strike. 4 overs bowled. It's 39 for now. सेंट्रल पंजाब के कप्तान ने पहले 4 ओवर्स में 3 बॉलर्स को आजमाया है, लेकिन अभी तक कोई चांस क्रिएट नहीं कर सके। 2 ओवर किए एहसान आदिल ने, और इससे पहले कासिम अकरम से 1 ओवर कराया गया। 1 ही ओवर किया था जफर गौहर ने। कामरान अकमल कल बदकिस्मत रहे, इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया गया। गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल रही थी। शायद मैच का वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। अजहर अली मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में, हम उनका खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का। और अजहर, ये खूबी है फखर जमान की कि औसत इनकी सिर्फ 26 है T20 करियर की, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा रखते हैं, हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो प्लेयर्स टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और जो फिनिश करते हैं। आज भी बहुत ज़बरदस्त आगाज़ इन दोनों बैट्समैनों की जानिब से, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। और इसे उठाकर खेल दिया। स्क्वायर लेग बाउंड्री के आसपास कोई फील्डर नहीं था, और अगर होता भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रिजवान ने आज के दिन का अपना पहला छक्का लगाया। पिछले ओवर में भी यही शॉट ट्राई किया था उन्होंने, और वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इस मरतबा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट किया, थोड़ा ऑफ साइड पे गए, बॉल में पेस काफ़ी था, उसको यूज़ किया। दोनों फील्डर्स जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दोनों ऊपर थे और बखूबी वाकिफ थे रिजवान इससे। स्वीप शॉट खेलने पर मलका हासिल है स्पिनर्स के खिलाफ मोहम्मद रिजवान को। रिपीट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ज़्यादा बाहर थी स्टंप्स की लाइन की। कहते हैं ना तारिक कि अगर कीपर स्वीप ना मारे तो वो विकेट कीपर नहीं, तो स्पेशलिटी होती है विकेट कीपर की स्वीप। इस बार कैच आउट हो गए, गेंद को ज़मीन पर नहीं रख सके कट करते हुए। उनकी तवक्को से ज़्यादा ये अकरम की गेंद बाउंस हो गई थी। बड़ी अहम कामयाबी हासिल की सेंट्रल पंजाब ने ऑफ स्पिनर के ज़रिए। बहुत ही अहम काम है अभी, और बॉल कट के लिए आइडियल था, लेकिन उसको गैप भी ना दे सके और ग्राउंड पे भी ना रख सके, और सीधा गेंद आबिद अली के हाथ में। एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद रिजवान आउट हो गए। 23 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों पर, बहुत ख़तरनाक लग रहे थे, लेकिन अपनी इनिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाए। 45 पे 1। प्रोफेसर, और जिसको कह सकते हैं कि द मैन इन फॉर्म, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में मोहम्मद हफीज़, और आइडियल प्लेटफॉर्म दिया है दोनों ओपनर्स ने हफीज़ को। बॉल कट के लिए बड़ा आइडियल था, पेस भी थी बॉल के अंदर, लेकिन रिजवान का अच्छा शॉट बना भी लिया था, लेकिन अनलकी रहे, थोड़ा गेंद हवा में चली गई।
जी प्रोफेसर काफ़ी हैं। ये मोहम्मद हफीज़ के अलावा 2 प्रोफेसर अंपायरिंग भी कर रहे हैं। उनमें से आज एक हमें नज़र आ रहे हैं ये सामने पवेलियन एंड पर अंपायरिंग करते हुए प्रोफेसर गिलानी। दाद देनी पड़ेगी कासिम अकरम को भी कि कल भी उन्होंने पावर प्ले में 3 ओवर कराए और आज भी उनको दूसरा ओवर दिया गया है पावर प्ले के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है कल भी और आज भी। अंडर प्रेशर नहीं आए। रिजवान उन पे अटैक कर रहे थे फुल तरीके से, लेकिन अपने नर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं और यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा साइन है। यार बहुत अटैकिंग लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए हाथ खोलने का मौका मिल गया। लगता है कि हफीज़ ने ये इनिंग्स वहीं से शुरू की है जहां कल इख्तिताम किया था। ओवर महंगा रहा लेकिन कामयाबी मिली इसमें कासिम अकरम को 49 पर 1। बिल्कुल ये आइडियल लेंथ है हफीज़ के लिए और पूरे तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया और बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये वो पहला बॉल फेस कर रहे हैं जो कि बॉल वाइड था, शॉर्ट था, लेकिन नए प्लेयर के लिए आके स्ट्रेट वे गैप फाइंड करना आसान नहीं होता। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। दर्जा हरारत जो है तकरीबन 38-39 डिग्री के करीब है। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों की निस्बत यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। अहमद बशीर आ गए हैं जो इस चैम्पियनशिप में पहली मरतबा एक्शन में नज़र आएंगे। दाएं हाथ से मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं या फास्ट मीडियम है? जी बिल्कुल मीडियम पेस बॉलर है। बहुत एक्सप्रेस पेस नहीं है इनकी, लेकिन लाइनर लेंथ पे काफ़ी अबूर है इनको। T20 क्रिकेट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है लाइन लेंथ पे कंट्रोल रखना। पहली गेंद पर जोरदार हिट लगाना चाहते थे फखर जमान, लेकिन एंगल पर बीट हो गए। मुश्किलात हैं सेंट्रल पंजाब के लिए क्योंकि KPK की जो बैटिंग लाइनअप है स्पेशली टॉप ऑर्डर बहुत फॉर्म में है। विकेट्स इनको दरकार हैं। विकेट्स नहीं लेंगे तो जो KPK की बैटिंग है मुझे लगता है बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। रनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट, तो ये भाग के भी रन बनाएंगे और बाउंड्रीज से भी रन बनाएंगे। स्लिप में अभी भी अहमद बशीर के लिए कोई फील्डर नहीं। फाइन लेग को दायरे में रखा गया है। स्क्वायर लेग के फील्डर बाउंड्री लाइन पर हैं, थर्ड मैन के भी। और मिस फील्डिंग, ऑन साइड स्वीपर को जाना पड़ा। 2 रन का मजीद इजाफा। फील्डिंग बहुत ही एक कमज़ोर सी कड़ी है सेंट्रल पंजाब की टीम की। आप स्पेशली जो आपके यंगस्टर्स होते हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एनर्जी लेके आएंगे आपकी फील्डिंग साइड के लिए। उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है किसी भी टीम में, स्पेशली फील्डिंग को अगर आप लें तो। इस बार चार्ज किया और ये बुलंदो बाला छक्का फखर जमान का, बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे वो नौजवान फास्ट मीडियम बॉलर को। तो हमला बोल दिया बाहर आते हुए। जी पूरा जोर लगाया फखर जमान ने और देख लिया था अहमद बशीर की पेस ज़्यादा नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया और ये उनके फेवरेट शॉट्स में से है, गो टू शॉट जिसको कहते हैं। और फ़ौरन से एक फील्डिंग में तब्दीली की है। साद नसीम ने मिड ऑफ पीछे लिए, थर्ड मैन को ऊपर किया है। अब देखते हैं फ़खर के क्या टैक्टिक्स होते हैं। गो टू शॉट अगर जो है वो क्रीज के बाहर निकलकर किसी बैट्समैन को खेलने की अहलियत हो तो फास्ट बॉलर हूँ या स्पिनर हूँ, बैट्समैन के पैरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि उसी से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है आपको लेंथ में कितना तब्दील करने की ज़रूरत है आखिरी मौके पे।
बिल्कुल, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा ये होता है, जैसे मीडियम पेसर है, पेस कम है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इवन शॉट भी करें बॉल को तो तब भी काफ़ी गैप्स होते हैं, और पावर प्ले के अंदर तो आपके पास मिड विकेट भी आप खेल सकते हैं, मिड ऑन भी खेल सकते हैं। इस बार फिर मिसफील्डिंग हुई, 1 रन का और इजाफा। ये अहमद बशीर जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये क्रिकेटर्स की फैमिली में से हैं। बशीर हैदर एक लाहौर के बहुत तेज़ बॉलर गुजरे 60 की दहाई में, ये उनके पोते हैं। बहुत से लोगों को याद होगा यूब ट्रॉफी का जो मैच था डेरा इस्माइल खान और रेलवेज़ की टीमों के दरमियान, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ था। वो आज तक कायम है। रेलवेज़ ने एक इनिंग्स और 851 रन से मैच जीता था। उसमें वो कैप्टन थे रेलवेज़ के, बशीर हैदर। हफीज सामना करेंगे अब अहमद बशीर का। डिफेंड करने पर मजबूर किया, अच्छी लेंथ को हिट किया अहमद ने। उनके पहले ओवर से 9 रन आए, पावर प्ले के बाद 58 पर 1 केपी। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ और साथ ही साद नसीम ने उस्मान कादिर को बॉल थमाया, और मुझे पूरा यकीन है कि साद नसीम उस्मान कादिर से विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को अगर आपने रोकना है तो विकेटें ही आपको बचा सकती हैं। पहले से ही स्वीप करने का इरादा जाहिर कर दिया था यहाँ पर फ़खर जमान ने। उस्मान अच्छी बॉलिंग फॉर्म में, विकेटें ले रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पर उतनी सपोर्ट मिली नहीं इन्हें। बिल्कुल, लेग स्पिनर किसी भी क्रिकेट में ट्रम्प कार्ड होता है, और जिस तरीके से जितनी वैरायटीज़ उस्मान कादिर के पास हैं, अगर वो अच्छे एरिया में लैंड करें तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। 190 जो है वो औसत स्कोर है अब तक, जो इससे पहले 12 मैचेस हो गए हैं। अगर आपको ये 190 की विकेट लगती अगर आप पहले खेल रहे हो? ये शॉर्ट गेंद थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। इसी तरह का ये सलूक होना चाहिए था जो मोहम्मद हफीज़ ने किया। लेग स्पिनर का यही थोड़ा चैलेंज होता है लेग स्पिनर के लिए, अपनी लेंथ लाइन को कंट्रोल करना, और बहुत ही पीछे गिरा ये गेंद। और मोहम्मद हफीज़ जिस तरह की फॉर्म में है, इस तरह के बॉल पे वो मिस नहीं करेंगे, और जिस तरह की आउटफील्ड है, ये पिच ज़रूर उतना बैटिंग, उतना बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा है शायद, बॉल शायद फंस गया उनके हाथ में, जिसको कहते हैं कि एक बहुत ट्रू पिच नहीं है, लेकिन स्टिल अ गुड बैटिंग पिच। और डिपेंड करता है आप बॉलिंग कैसी करते हैं इसके ऊपर, और जिस तरह की बॉलिंग अभी तक रही है सेंट्रल पंजाब की, तो मुझे लग रहा है कि 180-90 तो केपी के बना ही लेगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़तरनाक टीम बनकर उभर रही है खैबर पख्तूनख्वा। पहला मैच इन्होंने हार दिया था नॉर्थर्न के खिलाफ बहुत बड़े मार्जिन से। उसके बाद लगातार 3 मैचों में कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब और सिंध को हराया कल। दूसरी जानिब पंजाब का मामला यकसर मुख्तलिफ है। पहले मैच में सदर्न पंजाब को इन्होंने 7 विकेटों से हराया,
तो फिर सिंध, नॉर्दर्न और बलूचिस्तान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी भी बहुत मौके हैं, सारी जो टीमें जो बॉटम 3 पे हैं उनके पास मौके बहुत हैं। यही फ़ायदा है कि 10 मैचेस जब आप खेलते हैं, आपके पास जब भी आप अच्छे राइट टाइम पे आप पीक करें तो आप टूर्नामेंट में कम बैक कर सकते हैं। एक रन हासिल किया फ़खर जमान ने। इस बार ऑफ साइड में खेलकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 7 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 65 पर 1। रिजवान आज जल्दी आउट हो गए 23 रन बनाकर। साहबजादा फरहान पहले मैच के बाद से उनको बिल्कुल भी बैटिंग का मौका नहीं मिल सका है अब तक। पहले मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद से इनको डिमोट किया गया हैरानकुन तौर पर। बैटिंग लाइनअप तो केपीके की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सेंट्रल पंजाब को इस पिच को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर उस्मान कादिर का लास्ट ओवर देखें तो काफ़ी ग्रिप कर रहा है बॉल, और ये फास्ट बॉलर के लिए भी बड़ा साइन होता है कि वो चेंज ऑफ पेस करे, कटर्स करे। थोड़ा सा मुश्किल होती है बैट्समैन को कि टाइमिंग बनाने में, तो ये चीज़ फास्ट बॉलर्स को भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। अगर स्पिनर का टर्न हो रहा है तो आपको भी उसी हिसाब से पेस ऑफ करनी है बॉल से। यहाँ क्योंकि जो इब्तदाई दिनों की पिचेस थी वहाँ पर चेंज ऑफ पेस इतनी कारगर नहीं हो रही थी। ये पिचेस कदर ड्राई हैं, पेसर्स के पाँव लगने के सबब आपको कई ऐसी जगह मिल जाती हैं जहाँ पर आप गेंद को आहिस्ता गिरा सकते हैं। तो जो दरारें होती हैं पिच पर पड़ती हैं फास्ट बॉलर्स के बड़े बड़े पापोश लगने से। बिल्कुल, और लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ड्राइनेस ऑफ द पिच भी, जो ड्राई है पिच, इस वजह से बॉल टर्न हो रहा है। और इसी तरह जैसे ये लास्ट हफीज़ में बॉल हफीज़ ने खेला, वो भी बॉल बैट पे नहीं आया, तो ये चीज़ें बॉलर्स को असेस करनी होती हैं। हर पिच डिफरेंट होता है, हर पिच की लेंथ डिफरेंट होती है। मोहम्मद हफीज़ इसी माह अपनी 40वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, और इस टूर्नामेंट में ये सबसे उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं, लेकिन सबसे अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। बैटिंग में इनके करीब करीब कोई नहीं है। और सीखने को बहुत कुछ है यंगस्टर्स के लिए। जिस तरीके से ये अपनी बैटिंग को, इनिंग्स को पेस करते हैं, वो बहुत देखने के काबिल। कभी आते हैं 2-3 बड़ी शॉट स्ट्रेट अवे लगा देते हैं, देखते हैं कि किस तरह की बॉलिंग अटैक है, अपने बॉलर्स पिक करते हैं कि किन अगेंस्ट मैंने अटैक करना है। ये सारी चीज़ें आई थिंक जो उनके यंगस्टर्स इनके साथ खेल रहे होंगे या इवन ऑपोजिशन में खेल रहे होंगे और ये टीवी पे देख रहे होंगे, लोग कहते हैं कि T20 क्रिकेट जो है ये मॉडर्न फॉर्मेट, ये नौजवानों का खेल है, लेकिन हफीज़ को देखकर, कामरान अकमल को देखकर, कामरान अकमल की उम्र 38 बरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये सब पैशन की बात है। अगर आपका पैशन है और आपकी भूख है, तो अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, जितना इस एज में आके आपको क्रिकेट का पता लग जाता है, हफीज़ भाई को तो काफ़ी अरसे से पता है। हफीज़ ने इसे उठाकर खेला और मिड विकेट पर 4 रन हासिल कर लिए। एतमाद के साथ खेला गया स्ट्रोक था, क्योंकि गेंद बहुत देर तक हवा में रही, लेकिन ये इलाका खाली था दूर दूर तक। बिल्कुल, मिड विकेट पे बहुत बड़ा गैप था, और अहमद बशीर की पेस इतनी ज़्यादा नहीं है
बहुत आसानी से हफीज ने पहुंचा दिया इसको मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। बुरी लेंथ नहीं थी, लेकिन जब आपकी पेस कम हो और इतना बड़ा गैप इन फॉर्म बैट्समैन को नजर आ रहा हो। जी, और ये हफीज़ और फ़खर जमान जानते हैं कि शायद इस पिच पर जूं गेंद की उम्र बढ़ेगी, स्ट्रोक प्ले इतना आसान ना रहे। आखिर में 24 रन बनाने चाहिए। ये बाउंड्रीज की तलाश में इस बार सही प्लेस नहीं कर सके। 8 ओवर्स के बाद 72 पर 1। Fakhr 32 not out, Hafiz 14. Partnership of 27. Just seems as if they're building up to a situation where they can really get after the bowling. You've seen Hafiz in great form. Yesterday we saw last 10 overs produce 90. We still have 11.5 overs away from completion of the innings. You saw the pitch, Marina. Score. It's a bit different pitch altogether. Seen some cracks on it. A little bit on a slower side. I think anything around 180 would be a good total. If they can cross that total, it would be a bonus. But yeah, we'll get a bit slower in the second innings. But the form that Hafiz has been in, I don't know if you can call it form because it's continued for 2 years. His ball striking, he's hit the most sixes for Pakistan this year. And he plays spin very, very well. Down the ground, oh, brilliantly done. We've seen a lot of lapses in the field, but that one was superb. Good cricket all over. It was a good ball, driven down nicely. And then at the boundary, good fielding. These are the runs you need to stop for your team, especially when the pitch is helping the bowlers. Have a look at that, full dive. Well done. I think Usman Qadir is bowling well today. We've seen him throughout the tournament try and bowl quickly. He's bowled a lot of flippers, tried to bowl that way, but today he just slowed down his pace and he's looked more in control bowling. And there you go, the slow leg spinner does for the in-form Hafiz. Usman Qadir gets a huge wicket. Hafiz out, stumped. Usman Qadir strikes, and it wasn't the same pitch Hafiz has been playing on. Really, really well bowled, just fraction change of length, and it did spin as expected. He was way down, no chance for him to go back. The big man, the powerhouse, has to move back. If he's gone, KP 77 for 2 now. Hafiz stumped. Shoaib Malik, who's not done a lot in this tournament, walks out to the centre.
39-year-old replaced by a 38-year-old. Shoaib Malik plays spin very well, but he's been out of sorts in the recent past. But I like the bandana he's got on. Beautifully bowled this by Usman Khader. Wanted to charge down the ground, but the length wasn't there. It was a bit of spin, and all Hafiz managed was just watch these stumps go off. Kamran Akmal made no mistake this time. Players need to realize it's a different wicket. There will be some turn, a bit of slowness in the wicket, but this guy on your screen, he has played some extraordinary innings. He knows how to deal with any situation. Again, spin. You're trying to get down to it, but there is a little bit of spin on offer, and once you slow it down, you will get it to go off the straight. Straight away attacking Bilal Asif, but yeah, brilliantly bowled. Nearly another one, Kamran Akmal. Batters need to know what kind of mindset and what plan they should have on this kind of wicket. It's a good bowler, Bilal Asif. Smash to the offside. Shoaib Malik starts off with a single, but we know that he plays spin well. There's been discrimination in the comm box. I've got nothing, but Marina's got a full cup of tea. So, as usual, I miss out. It's hard, but always good to have a cup of tea by your side. Obviously, a used pitch. Obviously, this. Well, the last day in Multan here, so the pitches will slow down, and you've got to think that the spinners would have a role, but unfortunately after today they're shifting to Pindi, which will have good wickets to bat on. But it's important for KP to get Shoaib Malik into form. We've seen that he's over the years he's so good in the middle order. He makes sure that you get to that big total, and he doesn't compromise on style. He's got that bandana, almost like the mask of Zorro, cut in half. For Zaman, he always likes to dance down the wicket in charge, but needs to be really careful. Bilal Asif is a smart operator. It's a good tournament for youngsters with Zimbabwe series coming on. Misbah early on mentioned that he would be announcing 23 player pool. 10 gone, it's 82 for 2. Sabzada Farhan, Iftikhar Ahmed, Wahab Riaz, even Zoeb Khan can hit the ball out of the park, but he'll probably more pace off the ball. Seeing how this pitch is played throughout these first 10 overs. Important that Shoaib Malik gets a start. He's an excellent player of spin. Usman Khader, meanwhile, has bowled well.
The spinners, it's important to know what pace to bowl on a particular pitch, and he's found that exact pace so far. He's been a good nick in the past few matches, hitting the right areas, and this wicket especially will give him some support. The gamble in T20, it's difficult for spinners because we sit here and say that yes, you should throw it up, you should slow it down, but it is a risk. But you have to calculate what the risk and reward is. I think on this particular pitch, especially, you can afford to be a tad slower because you've got a chance with the ball gripping and spinning. But to be brave enough to do that, that takes some doing. But today, Usman Qadir is seeming to do it. Yeah, look, going off the straight, bowling it slowly, perfect leg spinner. Beautiful ball by Usman, perfect length to hit for a leg spinner on this wicket. He was quick with gloves, Kamran Akmal, but lucky for Shoaib Malik. Seems like he's... Is it in air? That's the question. Just a single. It's the spinners that have made an impact. Kamran Akmal taking that well. He'll be happy with that stumping. Tries to hit that to the leg side again. The ball just holding up. I think it was the googly, not sure. But even Fakhr's finding it difficult, although he's been there for all of this innings. Wanted to take the aerial route, but lucky enough it fell safely. Not many big hits coming now. Things are going well for CP. End of the 11th, it's 87 for 2. Drone shots. I don't think the drone even comes down at night. It's just left there. You see it circling from a hotel window as well. Just keeping an eye on everybody. Good stuff. Fakhr goes leg side. This time he's nailed it. Out of the ground. First ball, Al-Asif just hitting the right length. Fakhr was looking and he made sure he crossed the boundary by some mile. Down on one knee, middled it to perfection. Adding to the greenery because 10 trees will be planted courtesy Tuck and PCB. The umpire having a look at the ball. It was hit so hard and traveled so long that he had to have a look at it. Will he go again? Will he go leg side again? Sure he does. Same result, brings up his 50 with 2 maximums. Change in gears from Fakhr, 2 and 2. That was a brilliant strike. He
He's targeting Bilal Asif, knows his strength. Look at that, high back left, long levers. Launched it over mid, long on boundary for another maximum. Back-to-back 50s for Fakhr Zaman. Now with the spinners, he's now got the zone of targeting Bilal Asif over mid-wicket. Will he go again? No, just a single. Meanwhile, in other news, the Pakistan squad for the 3 ODIs and 3 T20 internationals against Zimbabwe will be announced on the 19th after this tournament. So a keen eye on all of the players that are participating in this tournament. The 18th is the final, and once the final is done and dusted, then only they'll select the squad for that series, which is eagerly awaited. Smashed through the offside. Shoaib Malik joins the party. Very quick on his feet, made sure that he used the depth of the crease. Bilal Asif getting more expensive. You cannot bowl there to Shoaib Malik. Just rocking over the back foot. Punched it through the cover area for wicket 4. Gone. It's 104 for 2. फखर जमान ने ये पिछले ओवर में जो बाउंड्रीज लगाई वो जाहिर हो रही हैं। ये 12वें ओवर में जो आप देख रहे हैं तकरीबन 17 रन्स बना दिए थे। वही इनिंग्स का सबसे महंगा ओवर भी था जो बिलाल आसिफ ने किया। लेकिन दूसरे एंड पर उस्मान कादिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन के साथ। पिच पर कई बार ये तेज करते हैं, स्लो पिच है, करना ज़रूरी भी है रफ्तार के साथ। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और बॉल को टर्न करने की कोशिश की है। पिच में देखा कि थोड़ी सी हेल्प है स्पिनर के लिए। फखर जमान को ज़्यादातर उन्होंने गुड लीज पे रखा हुआ है क्योंकि मिड विकेट की तरफ अच्छे शॉट्स खेलते हैं। मोहम्मद हफीज़ की विकेट हासिल की। कामरान अकमल जिनके हाथों पहले एक ज़िंदगी मिल चुकी थी फखर जमान को, हफीज़ को उन्होंने स्टंप आउट किया। जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं फखर जमान। चिप किया, एक ही रन उनको मिल सकेगा। बड़े स्कोर की बुनियाद रख दी है फखर जमान, मोहम्मद हफीज़, रिजवान ने मिलकर। बिल्कुल बहुत अच्छी पेस है इनकी। 100 रन बन चुके हैं 12.3 ओवर्स में। फखर बहुत ही पिच के हिसाब से रिस्क भी ले रहे हैं, साथ में अलॉन्ग द ग्राउंड सिंगल्स और डबल्स पे भी भरोसा कर रहे हैं और अपने बॉलर्स को पिक कर रहे हैं किसके अगेंस्ट उन्होंने चार्ज करना है। जो अब तक जो बॉलिंग हुई है उसमें ये उस्मान कादिर का आखिरी ओवर है। बिलाल आसिफ ने अभी तक 2 ओवर्स किए हैं। सफ़र गौहर ने 2 ओवर स्पिन बॉलिंग के किए थे शुरू में।
फ़खर मिस करके फुल टॉस को, लेकिन ये फास्टर वन था तो पेस शायद मिस कर गए बॉल की, लेकिन जितना सेट थे फ़खर तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि फुल टॉस पे हिट लगाएंगे, लेकिन लेट हो गए थोड़ा। बड़ा शानदार स्ट्रोक, गेंद पर रफ्तारी से फील्डर के करीब से निकल गई, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं थे मिड विकेट पर। चौके पर उस्मान कादिर के इस स्पेल का इख्तिताम किया। ये छक्का हुआ है। अगेंस्ट द स्पिन हिट मारी फ़खर जमान ने और 6 रन हासिल किए। 10 दरख्त लगेंगे टक और पीसीबी की जानिब से। ये फ़खर जमान देख सकते हैं आप, उनकी जो बैटिंग का पैकेज है, चालीस गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे हैं फ़खर जमान। उनके पास सेंचुरी करने का मौका है। फ़खर जमान ऑफ स्पिनर के खिलाफ, लेग स्पिनर के खिलाफ, फास्ट बॉलर के खिलाफ यकसा महारत आज उनने दिखाई है। ये क्रीज में मूव करते हैं फ़खर जमान, बहुत पुट ऑफ करता है स्पिनर को स्पेशली। वापस आ गए हैं गेंद करने के लिए ज़फ़र गौहर। बिलाल आसिफ को हटा लिया गया, जो गेंद को बहुत ज़्यादा फ्लाइट दे रहे थे। T20 क्रिकेट में आप ऐसा कर नहीं सकते। टेस्ट मैच की तरह फ्लाइट किए जाएं या टॉप स्पिनर करते जाएं, उसकी गुंजाइश कम होती है इस फॉर्मेट में। बिल्कुल, समटाइम बॉलर कुछ ज़्यादा गलत नहीं करता। जिस लास्ट बॉल फ़खर ने पहले ऐसे शो किया कि वो ऑफ स्टंप की तरफ हिट लगाएंगे, कवर के ऊपर से मारेंगे, गुगली टांग पे पिच किया थोड़ा उस्मान ने, फिर उसी एंगल से उन्होंने मिड विकेट की तरफ बॉल को हिट किया। बहुत मुश्किल होता है T20 क्रिकेट में, स्पेशली इस फ़खर जमान जैसा बैट्समैन सेट हो गया हो और बॉल को अच्छे तरह देख रहा हो और पिच की पेस से भी उनको पूरी तरह यूज्ड टू हो चुके हों उससे। फ़खर जमान ने बड़ी हद तक अब इंजरीज से छुटकारा हासिल कर लिया है। ज़ख्मी हो गए थे जब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेले थे 2018 में। और ये बहुत ज़ोरदार शॉट, बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं और गेंद पल पलक में ही निकल गई बाउंड्री लाइन के उस तरफ। ऑफ स्टंप पे आके खड़े हो गए हुए थे फ़खर जमान और ज़फ़र गौहर ने सोचा कि ये मिड विकेट की तरफ हिट लगाएंगे और बॉल को उन्होंने और दूर फेंका उनसे, लेकिन फ़खर जमान ने उसको ऑफ साइड की तरफ ज़ोर से बैक फुट पर हिट मारी और बासानी 4 रन हासिल किए। इस बार ऑन साइड में खेला, फील्डर हैं और कैच पकड़ लिया उस्मान कादिर ने। एक मौके पर लगा था, शायद सूरज उनकी आंखों में आ रहा है, लेकिन गेंद को निकलने नहीं दिया अपनी हथेलियों से। बड़ी अहम कामयाबी ये ज़फ़र गौहर ने दिला दी सेंट्रल पंजाब को। बहुत बड़ा खतरा बनकर मुंडला रहे थे बॉलिंग लाइनअप पर फ़खर जमान। बॉल बहुत पीछे गिरा हुआ था और फ़खर जमान इसको बाउंड्री से पार नहीं फेंक सके और एक ज़बरदस्त कैच उस्मान कादिर की जानिब से, क्योंकि सूरज जो था बिल्कुल उनके अगेंस्ट बॉल आ रहा था और फ़खर जमान ने बहुत ही खूबसूरत इनिंग खेली 66 रन की 42 बॉलों पर। इफ्तिखार अहमद को और साहबजादा फरहान को अभी भी इंतज़ार करना
पड़ेगा। बैटिंग करने के लिए इस वक्त आसिफ आफरीदी आए हैं। अच्छा पिंच हिटर इनको समझा जाता है, स्पिनर को अच्छी हिट लगाने की अहलियत रखते हैं। जफर गौहर लकी रहे और बहुत ही सूरज के सामने देखते हुए कैच पकड़ा है। और थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा उस्मान को, इतनी धूप निकली हुई है और ना आपने कैप पहनी है ना ग्लासेस पहने हैं। आजकल के दौर में तो ग्लासेस मस्ट हैं, ख़ास तौर पर अगर इन्हें ये ग्राउंड की मशरकी तरफ फील्डिंग करनी है। और इस बार सामने की तरफ हिट लगा दी। पहली गेंद पर आसिफ आफरीदी ने छक्का लगाया। शायद आफरीदी नाम ही ऐसा है, छक्का, और शायद आफरीदी। 10 दरख्त और टक और पीसीबी की जानिब से लगेंगे। और जिस तरीका जो इंटेंट शो की है अफरीदी ने, ये तो लगता है काफ़ी दरख्त लगवाएंगे आज। पैड पर लगी, पिछले पैड पर लगी। अंपायर का यह ख्याल था कि गेंद ज्यादा स्पिन हो रही है। लेग बाई का इशारा आने को है। जफर ज़्यादा खुश नहीं थे अंपायर के डिसीजन से और पूछना चाह रहे हैं अंपायर से कि ये आउट क्यों नहीं है। और बॉल स्पिन हुआ, बहुत ही नीचे लगा, बैक फुट पे थे, बहुत ही नज़दीकी मामला था। हाँ, क्योंकि पिछली टांग क्रीज के अंदर थी। और एक और बड़ा शॉट खेल दिया, क्लियर कर जाएंगे उस्मान कादिर को। ये बहुत बड़ा छक्का लगाया जफर गौहर। अब तो और भी ज्यादा नाखुश होंगे। 133 पर 3। बिल्कुल उनकी जहां पे वो बॉल को एक्सपेक्ट करते वहीं पे बॉल पेश किया। और आसिफ अफरीदी बॉल बिल्कुल नहीं रोकेंगे, इनको यही जॉब दी गई है। और ओवर के एग्जाम पर 133 पे 3। मोहम्मद रिजवान 23 रन बना सके। हफीज़ आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन थे, उन्होंने 17 रन बनाए। गिरने वाली तीनों विकेटें आज स्पिनर्स ने हासिल की हैं। स्पिनर्स प्ले में आए हैं आखिरी दिनों में। हालांकि जो औसत है स्पिन बॉलर्स की इस मैच से पहले तक वो 43 थी विकेट लेने की। फास्ट बॉलर की औसत ज़्यादा बेहतर थी, 26 की। थोड़ी सी प्रोएक्टिव सोच कहेंगे केपीके की तरफ से, क्योंकि 3 से 4 बॉल अभी जफर गौर के पड़े थे। लेफ्ट हैंडर को भेजा, इफ्तिखार अभी डगआउट में मौजूद हैं, सबज़ादा फरहान भी मौजूद हैं। काफ़ी आगे चले गए थे, डायरेक्ट थ्रो की ज़रूरत थी, ऐसा हो नहीं पाया। देखिए कितने बेताब हैं आसिफ आफरीदी, स्ट्राइक लेना चाहते हैं वो अहमद बशीर के सामने। बिल्कुल नज़दीकी मामला हो सकता था, अगर ये डायरेक्ट हिट होती शायद आउट ही होता। थोड़ा सा अगर अहमद बशीर भी जल्दी विकेट पे आते तो शायद वो भी रन आउट करने में कामयाब होते। ये अक्सर हम देख रहे हैं कि जब भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो आती है, बॉलर्स की कलेक्शन में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, वो डायरेक्ट थ्रो की इंतज़ार करते हैं। शोएब मलिक बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि वो आखिर में तलाफी कर सकते हैं। बाउंड्रीज लगाने की उनमें खासी अहलियत है अब भी। और बिल्कुल आसिफ अफरीदी उनके साथ खेल रहे हैं और उन्होंने तो मेरा ख्याल बॉल रोकना है नहीं, इसलिए शोएब यही
ये हमेशा अपने आप को टाइम देते हैं और हमेशा जब भी मीटिंग्स में बात होती है कि 20 ओवर में भी बहुत टाइम होता है, ये हमेशा से कहते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी ये है कि फिर ये मेकअप बहुत ज़बरदस्त करते हैं और चेज़ के अंदर जब चेज़ कर रहे होते हैं तब भी बहुत बिलीव रखते हैं अपने आप पे कि वो किसी किस्म का रन रेट भी चेज़ कर लेंगे। इस बार गैप में गेंद को खेला दूसरे रन के लिए। दोनों बैट्समैन बआसानी अपनी अपनी क्रीज में पहुंच गए। शोएब मलिक बड़ी तेज़ रनिंग करते हैं, इनके साथ आसिफ अफरीदी को जाहिर है कि ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल पेस ऑफ करने की ज़रूरत है थोड़ा सा अहमद बशीर को, स्लोअर वंस, क्योंकि बहुत ज़ोर से बल्ला घुमा रहे हैं आसिफ अफरीदी और अगर बॉल को थोड़ा सा अच्छा स्लोअर वन कराएं इनको तो विकेट लेने के चांस हो सकते हैं। फुल टॉस, गेंद गैप में जा रही है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर नहीं कट ऑफ कर सकेंगे। दौड़े ज़रूर थे कासिम अकरम लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। ये रफ्तार तो बिल्कुल आसिफ अफरीदी के लिए आइडियल है और ये लेंथ भी, फुल टॉस बॉल किया और कवर भी बहुत वाइड था, मिड ऑफ भी बहुत सीधा था, बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है। अगर आपने फुल लेंथ बॉल करना है तो आपको जो कवर का फील्डर है काफ़ी सीधा रखना चाहिए। वो गैप अभी भी मौजूद है। इस वक्त फाइन लेग, थर्ड मैन और पॉइंट के फील्डर दायरे के अंदर हैं, कवर पॉइंट के फील्डर बाउंड्री लाइन पर हैं। विकेट के दोनों तरफ पेस को भी खेल सकते हैं। जिसे कहते हैं जो बैट्समैन कश्तियां जला के शॉटें मार रहा हो उसके लिए स्लोअर वन ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फाइन लेग भी ऊपर है, थर्ड मैन भी ऊपर है, यहाँ तो एज भी चौका है। स्लोअर वन के लिए मिड विकेट को डीप रखा गया है, मिड ऑन के फील्डर भी बिल्कुल पीछे भेज दिए गए हैं। और बोल्ड कर दिया इनसाइड एज और गेंद ने स्टंप्स को निशाना बनाया और इस तरह हिसाब बराबर कर दिया। इस ओवर में लगने वाली बाउंड्री का अहमद बशीर ने और डेंजर मैन आसिफ को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन बनाए। लेंथ बॉल था, उतना ऊपर नहीं आया जितना आसिफ अफरीदी एक्सपेक्ट कर रहे थे और इनसाइड एज लगा और बोल्ड हो गए। 20 इंपॉर्टेंट रन्स बनाए और तेज़ी से बनाए 7 बॉलों पर सिर्फ, और 142 पे 4। इफ्तिखार अहमद आ गए हैं। कल सिंध के खिलाफ इन्होंने बड़ी आला बैटिंग की थी, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। शाम के वक्त अच्छा मौसम रहता है, दूसरे मैच में फील्डिंग करने वाली टीमें महसूस होती हैं, लेकिन दिन को ऐसा नहीं। बिल्कुल, इतनी गर्मी में अगर ताज़ा हवा का झोंका है तो बहुत अच्छा फील होता है और इफ्तिखार जिस तरह की फॉर्म में हैं, एक ताज़ा हवा का झोंका है केपीके की टीम के लिए। ये ताज़ा हवा का झोंका, कश्तियाँ जलाना, नज़र जब यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं तो खुशी होती है। यहाँ पर जफ़र गौहर को कंटिन्यू करना है, फार एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दो ऐसे बैट्समैन उनके सामने, कोशिश ये होनी चाहिए जफ़र गौहर की कि इफ्तिखार सामना करें उनका, और अब ऐसा ही होगा। अच्छी इनिंग खेली आसिफ अफरीदी ने, जो कप्तान ने उनसे डिमांड की थी। उन्होंने एक बॉल को भी नहीं
टेंटेटिव अंदाज में खेला, वो जिस प्लान से आए थे हर बॉल वो उसी प्लान से खेले। अच्छा बॉल जफर गौहर का, थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा अपने आप को। नया बैट्समैन है, बॉल को टर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि सिर्फ 5 ओवर रह गए हैं, लेकिन अपने आप को बैक करें इस वक्त। ये क्योंकि अभी भी अच्छी पोजीशन में ये केपी की टीम है, क्योंकि पिच के एतबार से जब हम देखते हैं तो ये टीम 190 की तरफ रमा दमा है। यहाँ से इतने रन्स बन सकते हैं जितनी इनकी बैटिंग बाकी है। ये मुश्किल स्कोर होगा पंजाब के लिए। कामरान अकमल की फॉर्म भी मिली जुली है, बाकी ज़्यादातर नौजवान बैट्समैन हैं। इस वक्त केपीके की कोशिश होगी कि वो 200 को टच करें, और सेंट्रल पंजाब ये सोच रही होगी किसी तरीके से ये 180 के आसपास इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर लें। इस बार लॉन्ग ऑन पर हैं लेकिन नहीं रोक सके। एहसान आदिल गए थे, उनने डाइव भी की, गेंद बड़ी तेज़ी के साथ निकल गई। आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है, हालांकि 2 फील्डर्स के दरमियान वाइड लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। बिल्कुल शॉर्ट बॉल था और ऑलमोस्ट बॉल तक पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी सी डाइविंग टेक्निक में मसला रहा जिसकी वजह से वो रोक न सके ये बॉल। बड़ी अच्छी क्रिकेट, 1 रन इत्मीनान के साथ बनाया और अगले ओवर में वही स्ट्राइक लेंगे इफ्तिखार अहमद। 150 रन मुकम्मल हो गए 16 ओवर्स के साथ साथ केपी के। Late afternoon session at the moment here from the Multan Cricket Stadium of the first game. That's match 13, day 7 of the National T20. For those who've joined us, it's KP versus Central Punjab. And KP won the toss today, decided to bat first. Done that correctly, but as the tournament is progressing, we're seeing that the wicket is getting a touch slower. The scores are not as high as they were in the first 2 days. But still lots of runs available around here. When you have someone like Iftikhar, you can press that accelerator. Brilliant knock from him the other day, just yesterday. Last 4 overs. I'd like to see more of Shoaib Malik as well in the tournament. Ehsan Adil continuing, 2 overs, none for 23 from the far end. Wide. Gotta go all the way back to the top of the mark and bowl that again. So if you look at the score, 150, you'd feel that they're probably lagging behind a touch, but when you've got someone like Iftikhar available, the kind of form he's in, you can back yourself up as the batting side and say that 185 is quite gettable out here. Almost. Well, KP's always finished the 20 overs with a bang. This time, though, you know how, oh, that just looks tasty. Sakandar, I haven't had that in a while. Yes, you're missing the simple pleasures of life. I think, but I don't have a sweet tooth, but I'm sure if you see that coming out of the Prahai, nice hot, you would probably don't mind getting a bite.
That looked like a drop catch, Sikandar. Effort at extra cover, but just slipped through his fingers maybe. It was a half chance. He tried his luck there to get that into his hands, but got it off. Well, right, just looking at it, if the car hit it at extra cover, it was flat, and good effort by I think Saad Naseem there. Must have clipped his finger with the bruise. You know, it's just that odd bounce that you get as a fielder when it just chips your nail. It can be very, very painful. A slight hold up in play when the physio from Central Punjab walks out. Dry fruits on top of these amazing sweets. Brilliant. Known for the Multani halwa. Some people call it the Hachi halwa. Very, very popular. Yes, I've been told do not come back to Karachi unless I have the Multani halwa with me, Sikandar, by my family. Well, then you better go and make that purchase, because today is the last day of the Multan leg. We leave for Rawalpindi. So now is the time for shopping, my friend. You want to buy that. 66 Fakhr Zaman, again amongst runs, getting them a start. And then Rizwan getting a start, couldn't convert it. Hafiz, big wicket that. Asif Afridi pushed up to get that score going. 20 off 7. He did his job. That's valuable 20 runs. In T20, a 30 is almost like a 50 over an ODI. I was just talking about Shoaib Malik. I'd like to see more of him. He's just getting his chance way down in the order, or maybe not too many overs left for him to go and express. But he's got loads of talent to push the accelerator no matter what number he comes on. That's how the bowling looks. Everyone's getting a fair share. A wicket each for Zafar, Qasim. Ahmed Bashir is brought into the side. Usman Qadir as well gets a wicket. Players ready to go once again. They say you got to reload that, so you have to go all the way to bowl it again. That's the second wide in the tournament, in the over. You almost bowled 3. You got away with 1. 4 wides in total. Usually bowlers try to bowl full and wide to avoid the batsman getting underneath it, but you've got to be accurate in that. He's getting a bit of a way movement, which is not really helping him. Hassan Adil. Slower one, works. He had it in his area. If the guy wanted to hit over mid-wicket, but nice change of pace by Hassan Adil. Seeing how the outside Yorker was working for him, he went on to that slower ball. But earlier you were mentioning how Shoaib Malik has taken his time today. Unfortunately, last few innings, he hasn't really, he exited early. But if you notice how Shoaib Malik usually bats, he likes to take ample time at the crease. He likes to get settled in. He gives himself the best chance possible to perform. And then when he gets going, and then it just fireworks. Oh, come on. That's the 3rd one in the over. His radar is way off. Trying to stay away from the reach of Iftikhar is just costing him extra deliveries and run. This would annoy the captain and the management. These are those costly extras that, you know, these games are so close. These are all high-scoring runs, run chasers. But when these extra runs, these extras get in the way, you see how a missed field here and there, extras, these 3 wides this over already will annoy the captain a lot. Sikandar, have you noticed since the Test series in England, a lot of fast bowlers are now on the headband game.
A lot of these Stuart Broad we saw, James Anderson we saw. Today we're seeing Ahsan Ado with the headband on. Yeah, whatever suits you. We'll call it a bit of style, and then also helps that sweat trickling down into your eyes. We've got longer hair. You prefer that? He does have hair that probably would bother him if it comes in his eyes. That's the fourth one. Frustration continues for Central Punjab. I think the captain should just have a word with Ahsan real quick, just seeing how he's doing. Kaman Akmal does not look happy collecting those right now. Every run matters, especially in the last dead overs. It's the momentum that you take into the second inning. And right now, KP looks in command with two set batsmen. Iftikhar is a big, big hitter. He's had a good tournament so far. He is on strike. He does look confident. And Ahsan Ado needs to refocus and get his line right. It's high in the air, but won't go anywhere. Just a bounce to the fielder in the deep. He's bowled 9 deliveries up till now in this over, 4 of them wides. Must be a bit tired now, running in again and again in a hot afternoon. As you saw, the ball was in the air. It was a nice stop. I think it was Abid Ali at the boundary line. As you see, the sun was in his eyes. He was either going for a catch, but when you go for a catch like this, it's easy for the ball to just drop and roll over for a boundary. So he did well stopping a boundary, at the same time trying for the catch at least. Wide, dot ball, 2, wide, dot ball, wide, dot ball, wide, 1. That's how the over has been now. 9 deliveries. Good bounce and carry. No, umpire's not interested. Neither's the keeper. 17 gone. 157 for 4. I love Multan. Basit loves Multan. He's going to come back here when Zimbabwe tours Pakistan. So that on the 30th of this month, they'll be here for the first ODI. And probably would like to see a selfie with Basit Khan standing in front of this I love Multan. Really nice city, Castle Basel. It's gone quite busy. I was just mentioning the last time around I was here, there was nothing around the stadium, and now it's heavily populated. 157 for 4. Spin in operation. Iftikhar on strike. Zafar Gohar, 3 overs, 1 for 32. Well, partner, they're bowling with the deep extra cover. If you do see how well Zafar Gohar played yesterday, he started off with good overs this time too, but he's been a little expensive. It is his last over, bowling the 18th. And it's like Shoaib Malik wants to get on with a move. Wrong line when you got fine leg up in the circle. Wrong line. You can tell your captain that you want that field a little wider, but that was the wrong line. If it crosses you, it will go to the boundary, that ball. As you saw, he pitched it short. It was easy pickings for Shoaib Malik to get a boundary and get his momentum going. Usually Shoaib Malik has this 1-2 punch, where if a bowler bowls it short, he usually gets out of the crease and takes a calculated risk. That's a strong area, Malik. He's got so many career runs in the backward point region, especially against the quick bowlers. We're talking about starting from the 30th. Zimbabwe tours Pakistan, the first ODI to be played here. In fact, the first 3 ODIs in Multan, then they moved to Pindi with 3 T20s. Lots of action. Pakistan's going to be busy. Again down the leg side, but this time squarer.
Well, Sikandar, this tournament is a great platform for the performers to cement their spot, to make an impact, get their name known by performance on performance, staying consistent with their performances. Zimbabwe is here for 3 ODIs, 3 T20s, and whoever performs should get selected. Goes really deep in the crease, Malik. He waits for the ball to the last moment, allows him that extra bit to pull that. Just gets in as deep as possible. Upish, but safe. Well, if you just look at this, just look how deep in the crease Shoaib Malik is. He uses this box really well for fast bowlers and for spinners. Just notice how deep in the crease, watch the ball, hit the middle, just knowing where Zafar Gaur is about to bowl. Using this box, front and back, is that small room that a batsman can create to play off a shot that they want. And Shoaib Malik is king at that. 18 overs gone, 166 for 4, KP. Welcome back, partner. 19th over about to come up. Iftikhar and Shoaib Malik looking well set. Looks like Ehsan Adil will bowl one more. Iftikhar got strong hand, strong base, and he hits the maximum long. He's been in great form this whole tournament. From the word go, playing positive shots, staying positive with his mindset. Should look for big ones today. The idea is right, taking the pace off. Make it a little more difficult for the batsman. They've got to use more power to help the ball cross the rope. Ehsan Adil knows that he has to work with his little bit experience. Not that pacey, but experience, and does have some variation. And as you've been noticing, any variety that you bring into this pitch, if you're turning the fingers over the ball, the slow balls that he's bowling, is kind of sitting in the pitch and kind of getting stuck, Sikandar. Oh, that's another one. That's wide number 5 in the last 2 overs that Ehsan Adil has been bowling. His wrist position is facing towards the first, second slip. He's just delivering it, trying to get that full and wide thing right. He's ending up awarding extra deliveries and extra runs. He's staying adamant with that wide Yorker, but has not gotten it right in 5 tries. Tried that Yorker, but nice low full toss for a single. Ehsan Adil has always been a good seam-up bowler. He's bowled really well in domestic cricket over the last few years. Maybe was working with some injuries. But even as a T20 specialist, it doesn't matter how much pace you have. Look at how Umar Gul yesterday used his years of experience to get that 4 wickets, just bowling wicket to wicket, just staying disciplined with his bowling. These are those small runs that matter most when you're chasing an inning. These extra Sikandar, like drop catches, make a huge difference. But CP needs to limit their mistakes this match if they want to get back on the winning side of things.
dealing in singles at the moment, KP. They bowled an extra over, Central Punjab, with those wides. Hassan Adil is almost bowled 4.3. He's also bowled an extra over. Right, so Shoaib Malik on strike. It's just been a bit quiet here in Multan. Not getting those boundaries and big hits going. We're just like an over and 2 deliveries away from the end of the innings. 171 is on board for KP. Shoaib Malik staying calm, Sikandar. Just not swinging from the hips for everything just because there's some balls left. Yes, I'm sure he wants a maximum, but just getting bat on ball, staying at the pitch. It's a long tournament ahead. KP still is in a good position to get a big score, but having their main batsman spending time in the middle is also crucial. Looking like a dangerous side with their batting lineup. And edge, and is that taken? Yes, well done. Just one-handed. Kamran Akmal. That's the end of Iftikhar. It was a little wide, got a thick edge, held the edge to it. Kamran did well, the timing was right. yes, cat-like reflexes by Kamran Akmal. Was not expecting that, just took his hand out, but nicely watched and just grabbed it with one hand. That must have made Hassan Adil proud, just bowling that one extra over with his wide balls. Did get Iftikhar for 14. KP 171 for 5. Wahab Riaz, the new batsman. And the wicket to go down is Iftikhar Ahmed. Trying to get some quick maximums with Wahab Riaz. One ball to go this over. They still have Zohaib Khan. I think Sahibzada Farhan is playing as a specialist fielder these last few games, Sikandar. What I'm looking at is we already an hour and 36 minutes into the innings. We've still got an over and a delivery left. And should have been finished a long time ago. But it's just that everything is going. I don't know if it's me. It seems like it's slow motion. End of the over. It's 19 gone. 171 for 5. Just look at these wickets from Hassan Adil last night. In the wickets, just even Yasir Shah, all these balls that he was bowling was right pitched in the middle. And as you see, the third one, a deep mid-wicket. Easy catch for the fielder there. Hassan Adil's strength has always been bowling stump to stump, staying close to the crease, bowling straight into the lines. When he tries a little too much fancy variations, he's maybe not in his best game. But he bowled last night. It's hot and humid today. Fast ball is playing back-to-back games. Played an evening game yesterday, playing now. But as you see, they're already an over late. Just feeling the heat, I'm sure, slowing things down. With Ahmed Bashir finishing off this last over for the inning, with Shoaib Malik being well on set on 20. 6 balls to go. Shoaib Malik has played well, taken his time today, but should try for some maximums now. Full toss, wide, just a single. The batsmen seem to find fielders
in the deep. That's what's been happening here. That's why I run a ball for Malik, 22 of 22. Still, even if they're moving in slowly, they're reaching that target. That's estimated, 180, somewhere around that. And if I'm not wrong, I think only on one occasion 180 has been chased in Multan. Twice. Full toss to Wahab this time. And the same result. Wahab Riaz was feeling kind of fancy. Just standing in that position, trying to play with Ahmed Bashir's mind for where to bowl. He wanted in the slot. Another full toss, low Yorker by Ahmed Bashir right there. 4 balls to go, Sikandar. What do you think? 180, 182? They should get that 8 figure on the board. It should be 180 at least. Should be possible. That's the onside field. Spread out, except for that short fine leg. Singles is what KP is dealing in at the moment, 174. And got 3 more deliveries to go. Usually not like KP when they're ending an inning. Now with Wahab Riaz being on strike, Ahmed Bashir is going to try for that Yorker once again. His field, if you notice, third man is up in the circle, so he has to bowl towards the stumps. Wahab Riaz looking like in that tape ball move the way he's standing, Sikandar. And he's gone. That should be out. Trying to scoop that. And gets a bit of glove and handle. And easily taken by Kamran Akmal. Yes, Wahab Riaz was feeling very ambitious, trying to play it over fine leg, but just a slow ball by Ahmed Bashir, and the ball just popped up for an easy catch for Kamran Akmal. It's been a limited over so far. Wahab Riaz goes for 1, KP 174 for 6. Last 2 deliveries, Zohaib Khan walks out. Not sure if Shoaib Malik is going to get strike. 2 deliveries. But they got to get to 180. They've been hovering in this 170s for a while now, just dealing in singles. This over 2, it's just been 2 singles here. Get back to the last wicket, that of Wahab Riaz, trying to scoop one against the fast bowler. Just getting glove on it. Trying to scoop it over fine leg, completely missed it. An easy catch for Kamran Akmal. Well watched by Ahmed Bashir. This is still a score that KP can defend with ease. They got disciplined bowling without their star bowler Shaheen Shah Afridi today. But they've stayed disciplined. They've been led well by Mohammad Rizwan. Full toss high in the air and should be taken. Yes, it is. That's the end of Zohaib Khan, but brings Shoaib Malik on strike for the last ball. That's wicket number 7 now, walking back. Another try for a Yorker with full toss and went straight up in the air. First ball for Zohaib Khan. Came in, tried to hit it for a maximum first ball, but just popped it up in the air, making Ahmed Bashir on a hat trick. Zohaib Khan goes for a duck, 174 for 7, KP.
Finally, Saibzada Farhan is here to run quick this last ball. Sikandar? I remember him opening in the PSL. He's coming in number 9. Pulled away, and will it earn him a boundary? Yes, so finally we see something crossing the rope. A boundary to end the innings, and it is 178 what KP have managed to put up on board after 20 overs. I'm sure they wanted 85, 185 on the board. They should feel content with their bowling lineup and their discipline and their leadership that they can defend this today. Shoaib Malik played a nice handful innings, stayed not out, got some bat on ball, got his confidence back up. Will it be enough? Will Central Punjab be able to chase this today? I think Central Punjab has done a good job. In the last 5 overs, KP just managed 36 runs. From KP standard, what we've seen of them, it's just unbelievable. Just 36 in the last 5. Fakhar Zaman, 66, giving them a good start. Down the order, Malik remaining not out on 27. Asif Afridi's quick fire, 20 of 7. That's the highlight there. Iftikhar wasn't really what he's been showing in the tournament today. 178 for 7. Look at the bowling now. Yes, if the car could not just kick on today, otherwise it would have cost 200 plus. Well, Zafar Gohar, Ihsan Adil Qasim all got 1 wicket. Ahmed Bashir, the standout, playing his first game, 3 wickets in. Usman Qadir, 1 for 27, 178 for 7. Central Punjab. Short break. We'll come back soon.
So back once again here at the Multan Cricket Stadium, the first game of the day and 13th of the tournament. This is how it went. KP won the toss, decided to bat first. Fakhr Zaman and Rizwan took off using the power play and trying to get as much as possible in those 6 overs. Fakhr Zaman giving the charge to spinners as he does. He likes going after the bowling. Just that movie, loves that mid-wicket area. And at the same time, Rizwan has been so good. He's now practiced the art of getting those big hits going. And on that occasion, he just ended up playing a bit too hard to backward point. Rizwan has led the side from the front and he's got some good shots going. And on the other hand, Fakhr Zaman doing the best what he does. This is the moment when Rizwan was in charge, but completely missed that one. Kamran Akmal did the job. That was the first wicket down. Usman Qadir was the one who got that wicket. Then Fakhr Zaman continued. He was the highest scorer in their batting, got a 66. All the hits are so clean. And he's got himself a 50. And Shoaib Malik had joined him at number 3. Got a lot of time, but just couldn't get amongst runs, Malik. And this is the catch that was taken by Usman Qadir. Good catch, looking into the sun to dismiss the inform Fakhr Zaman. Asif, 20 of just 7 deliveries. He came out. It gave an impression that he's going to tear the bowling attack apart, and he did so for a while. He gave them that boost that was required after he got that one, which kept slightly lower and clipped his leg stump. Iftikhar, brilliant performance in the match last night, but today just a bit of struggle going on in the last 5 overs. As I said, just got 37 runs. This was Iftikhar's wicket, one-handed catch by Kamran Akmal, and a wicket for Ehsan Adil. This a scoop attempted by Wahab Riaz, getting it on the glove. Another catch for Kamran Akmal and a wicket. And then just that one ball for Zuhaib. Saad Naseem taking the catch. These were the last few moments. And this is the last ball of the innings where Malik pulls one for a boundary. And the score goes to 178 for 7. So the target now for Central Punjab, 179 in their 20 overs. Gettable moment, chance, opportunity for Central Punjab to avail those 2 points before we reach Rawalpindi and keep themselves alive in the tournament, because after this match, both these sides would have played 5 games apiece. Total number of games to be played by each are 10. So you want to be somewhere in the table after the halfway stage. And now we're waiting for the Central Punjab reply. Got a bit of warm-up going on by the KP bowlers. So, talking about resting Shaheen Shah today, 2 fifers. Correct decision, because they seem to be nicely placed in terms of the points on the table, KP. Yes, of course. Just KP testing their bench strength. Now, back-to-back games. Shaheen Shah Afridi's gotten 2 fifers already. Giving him rest, it's a long tournament. You want to save your best bowler for your best matches coming forward. So I'm sure it's well-deserved rest too. And they get to check how Arshad Iqbal is going to do today. From Central Punjab's point of view, they need to now, as I said, avail the opportunity of this score, which is not as huge as it has been. We were just talking about it, only 2 occasions, 180 has been chased here in Multan. But as always, no matter how many times we repeat it, Central Punjab will be relying on Kamran Akmal's start. If he can provide them a start, he can, in no time, help them achieve the required run rate and get them into a position that can be a nice platform for the batsmen to come. See, if you notice with KP, they got big hitters down the order, Sikandar. Central Punjab has Kamran Akmal on top. They've hit the least amount of 6s in this T20 tournament. So they have those players that can win you matches, but they have to step up. If, let's just say, Kamran Akmal does not step up today. He's struggled this tournament. He looked good last inning. He was getting bat on ball. He was taking Umar Gul to the cleaners till he got out. But then Abdullah Shafiq once again stepped up, got a half century. Rizwan was looking good, but their main batsmen will have to be there in the last 5 overs, especially the one that are set from top. Abid Ali can anchor the inning, but then he should also provide them with batting throughout 20 overs.
when they lose top order batsmen and rely on their all-rounders to finish off the game, they're just making it more difficult for themselves on a pitch where it favors the batsman. This is batsman paradise in Multan Cricket Stadium. So if Central Punjab today can have, from their top 4 batsmen, if someone can play through and be there in the end overs, they can win this match. It's below 180. It's a good pitch to bat on. Shaheen Shah Afridi is not playing today, so they're testing their strength. KP, Rizwan is leading well from the top, but Central Punjab, if they get one win, that's how the confidence will be boosted, and you can build on that from there going into Pindi. Well, thank you, Sheza. And Sheza will be now taking a break as we get some fresh legs. Joining us, Basil Khan for the first 4 overs in Central Punjab's reply. The umpires are now walking in with the brand new Kookaburra, and the time for Central Punjab to come out with their reply. 179 is what they require. As mentioned earlier, they fancy their chances with this target. Should be good, daytime game. The key would be the start of the first 6 overs. Akmal has been in good form. Can probably get them off to a top gear start. Won't make it that easy. I think the only part that they can capitalize on, the Central Punjab, is the fact that there's no Shaheen Shah Afridi today. Shaheen is being rested. So now it's going to be a bit of an opportunity. Kamran Akmal. Alongside Abid Ali. And alongside me is Basil Khan. Had a long lunch. He's looking all fresh and set to make Central Punjab win this one. 179 is what they need. With no Shaheen Shah Afridi, you would take your chances. Why do I want Central Punjab to win this one? I said KP favourite for the tournament. But we've got to be neutral. We need Kamran Akmal to fire. We need Abdullah Shafiq to continue his form. But what we've seen throughout this tournament is that there's a dependence of Central Punjab on Kamran Akmal at the top of the order. He's the one they look at to give them that explosive start. And once he goes, then the run chase becomes a tad difficult. It's not a huge target, 179, but considering the conditions, I think it's quite a competitive, or it's quite a good score even, because the ball in the first innings wasn't coming onto the bat as it normally does. Obviously, ground's being used a lot, the pitch is now being used, so start of the run chase. Off the mark straight away. Central Punjab and Kamran Akmal with a single. We got to be neutral. I haven't received that manual where it says that we've got to give equal support. I don't know, you're so tilted towards Central Punjab off air. On air, you're neutral. Well, the manual was sent to you by email, and apparently you don't look at your emails at all. Our stats man also complains that he gives you a stats email which you don't look at all. It's only Tariq Saeed who looks at the email, looks at the stats, and then makes his valid points. Sikandar Waqt, well, I think you have to check your junk emails. Hit and miss. You see that such high praise for Tariq Saeed. You're still into Central Punjab. Yes, because today, well, it was yesterday, I think I overheard Tariq Saeed telling, well, it was historical fact, but information for myself, 2,500-year-old city Multan.
Yeah, you were saying. So he adds to our historical context, and he adds to, I think he should have been given he should have been an honorary professor, the knowledge that he has, especially about the cities of Pakistan and the way that he can describe each and every corner there is. We're in Multan. It's not even his home city. You go to Lahore and he'll tell you everything. For a moment it was in the air, but then he played it very straight. No chance for mid-on to get anywhere in way of that. Boundary, the first one from Central Punjab. Abid Ali gets down the track and hits it for a boundary. Again, I've been corrected by Tariq Saeed. He said, he didn't say specifically 2,500. He said many thousands. But first wicket done. So that'll cost Central Punjab not thousands, but probably 25 runs. Well, yeah, that was sort of a soft dismissal. He just went on with that shot, but didn't really put enough power behind it. Couldn't even clear that 30-yard circle. Easy catch for the fielder at mid-on, just moving a little to his right. That's first one for Asif Afridi. Have a look at that in the replay as Abid walks back for 5. And Central Punjab are already 1 wicket down in the very first over. In form, Abdullah Shafiq comes in at number 3 after the dismissal of Abid. We'll have a look at that wicket. Really, that was a nothing shot. It wasn't going anywhere. Yeah, he tried to hit it over mid-on. He'd gone straighter a couple of balls ago. Some shorter length, the ball drifting back in, so made it difficult. We've seen throughout the day's play that the ball hasn't really come onto the bat, as we have been spoilt by the quality of pitches throughout this tournament. Rashad Iqbal. Hails from Lahore. That's runs for Central Punjab. The minute you deviate, it runs available. Well, after much debate, it's Rashid Iqbal from Sawabi. Played for Karachi Kings in the PSL. Right now, he needs to find his line and direction quickly because they don't want Kamran Akmal to start firing. Dangerous is an understatement for Kamran Akmal. Coming back to the knowledge that Mr. Tariq Saeed possesses, you and I are so ill-informed, we can't even challenge that. We just have to agree with whatever he says. So it's a win-win situation for him. You sit next to him and he'll tell you stuff that you've never heard before. Amazing stuff. At least by the end of the tournament, you and I will be a touch educated than what we are. No chance. We're not going to retain anything. It's all going to go over our head. That's played very straight and it's beaten everyone. It's just beating everybody. Now there's a chase being given.
Well done. And third one being attempted there. And why not? It wasn't played that hard. It was just a gentle push. And 3 was available. Yeah, just the quality of Kamran Akmal coming to the fore. Drive down the ground. Murshid Iqbal's hurt his little finger. In the back of the commentary box, people are saying that fast bowlers were built tough. Little fingers didn't matter. Anyway, 3 runs for Kamran Akmal. So while we have a slight hold up in play, we're just talking about how important it is to know more about the surroundings, not just the game, and also to know the environment, what all has been played in this ground. Everything should be known. You and I should be well aware. But then sometimes, somewhere, I think that the other people who are involved in the crew, like the statistician, they need to work as well. I mean, we can't just do everything ourselves. So keeping that in mind, in the interest of the community, I try to retain as less as possible. I love that. But I have to give you this, Sikandar, that even though we've been working every day, double headers every day, go back to the hotel at midnight, you still found time to go out and do the needful. Get Son Halwa, make sure that the speciality of the area is promoted, and you've taken time out, and you made sure that you've gone out, although it is slightly difficult for us because of the time is you've made the effort, you've got that Son Halwa, and now you take it back to Karachi and distribute. You see, I can afford to do that because I'm not a known face. I mean, a person like you walks out to get something, you'll probably create a chaos. With a stampede. So next time if you need something, let me know, because I can just blend in and nobody would know. Anyway, enough of that. Back to the cricket. It's 14 for 1, and Abdullah Shafiq got a 50 in the last game. It was almost about 12 hours ago. 54. It's already got the only 100 that has been scored in this National T20 Cup. Wide down the leg side, and the tournament is the ideal tournament for the younger players coming through. Zimbabwe series around the corner. Keen eye on anybody who performs, but the standouts have been the ones who are pretty experienced. Mohammad Hafiz comes to mind. He's been the standout batsman by far, but this guy, Abdullah Shafiq, really has put his hand up with 2 quality innings. Sent back. Oh, had he collected the ball cleanly, surely Kamran Akmal had his partner in trouble. Abdullah Shafiq wanted a single straight away. He ran, but Kamran Akmal thought otherwise. One thing KP do well is that they're good in the field. It was Abdullah's call, though. Just looking at KP's performance today, you were talking about Hafiz and informed batsmen that they have. You have Fakhar Zaman who's scoring runs in almost every game. It just seems like they ran out of gas in the last 5 overs. Just scored 36 runs, and it was not even just anyone out there on the crease. It was Iftikhar who played so well last night. Shoaib Malik was there, but just 36. You've got to give credit to Central Punjab.
They need to capitalize and win this one for themselves. Two overs bowled. It's 16 for 1. Back to the city of Multan, ever busy. Always someone going somewhere. Such a positive vibe around the city. People are busy in what they're doing. There's lots of interest in food. So yeah, coming back to the last 5 overs, 36, not a single maximum. That's how bad they struggled. Yeah, credit to Central Punjab, the way they closed out the innings. Catch it, catch it, catch it! Flicked over the top and timed nicely. Abdullah Shafiq never overhits any delivery. Just times it to the fence. But that's the kind of shot Abid Ali should have played or wanted to play. He only ended up in the hands of mid-on. This time around, now we've got a long on in place and a deep mid-wicket. And now he's giving the challenge to Abdullah Shafiq to take those two on in the deep. Quick single here. So one feels when you look at those last 5 that probably somewhere KP would feel that they are at least 15, 20 short. Also, there was the feeling that maybe when the ball did get soft and you took the pace off, it wasn't easy getting those boundaries because the ball never really arrived or never really skidded onto the bat. So maybe the easier time to get those runs are up front. You just have to wait and see how this innings progresses. The fast judgment on the conditions need both sides to bat, but I just felt that maybe because it's been a used pitch, because there's so many matches being played in Multan and the square being used so much that maybe the life has just been sucked out slightly. There's a big gap there on the onside in front of the square. It's an easy push for those singles. In the power play, I think Rizwan won't mind that. But I'd like to see Central Punjab take off in the power play because they need to get themselves as close as possible to that target that's required, 179, because we see them falling short sometimes by 10 or 15 or 20. Last night also they were giving a fight. They lost the game by 3 runs. This time Kamran plays a horizontal back shot. And ended the over. 3 gone. It's 23 for 1. Three for 1, Kamran Akmal on 10, Abdullah Shafiq 7. 2 best batsmen for Central Punjab.
need to build a partnership. What depends on this pair. We've seen that already. You see that at any stage of the game, you don't want the required to go anywhere above 11 or 12. And Central Punjab knows that the middle order is not really helping them in the cause. So the better the start Kamran or Abdullah can give, these are the two informed batsmen for them, better for the team. Changing the field. And long on, going out, third man brought into the circle. Trying to entice Kamran to play that cut shot. The ball's angling back in. Next to play square on the offside. That has been the plan. We saw Sohail Khan bowl that in-swinger where Kamran Akmal got cramped for room. And yesterday even we saw Umar get the ball just to shape back into him. I feel that he got more of a chance with the ball shaping back in, because anything outside those stumps or outside the off stump in particular, Kamran is severe on. It was a sound, was it? Sheepish smile on the bowler's face. One feels that he got a bottom or an inside edge, but the ball just didn't carry to the keeper. Yeah, Kamran Akmal trying to force the pace, trying to make his own length. Comes down the track, it's banged in. I think it's a bottom edge. He swiveled and looked behind straight away, but it's died on Rizwan and never carried to him. Credit to Arshad. He's been bowling well in his second over. He hasn't really allowed Kamran or Abdullah to free their arms. Just he's on target, and he's also getting that bit of an extra bounce because of his height to keep the ball somewhere around the ribcage. And the angle back in is very important too. He's not given anything outside off. He's bowled quite straight, and it's worked well so far. Just 10 runs off his 10 deliveries. And that should, oh wow, for a moment I thought Wahab Riaz is going to attempt that. It was in the air for a while, and Kamran for sure didn't get hold of it. And the change-up, pace and bounce in that short ball. Hurried on to Kamran Akmal. His top edge stayed in the air for a while. Aborted by Wahab Riaz. I think he didn't pick it up straight away. But yeah, an opportunity. Iqbal, last ball of his second over. Another good over. Just a single to end the fourth. It's 26 for 1. ये आने वाले बैट्समैन हैं रिजवान हुसैन, जो आउट ऑफ फॉर्म है। खुद जो कप्तान है साद नसीम, उनकी भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं। नसीम शाह आज भी नहीं खेल रहे। सिर्फ 2 ही मैचेस नसीम शाह ने खेले थे, 2 विकेटें ली थी 78 रन के एवज। जुनेद खान अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे। इस साइड से पहले आफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया 2 ओवर्स का। खुलकर
खेलने का मौका फराहम नहीं किया अब्दुल्ला और कामरान को। बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार खेला ओवर द टॉप, बड़े दिलकश अंदाज में ये शॉट एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए अब्दुल्ला शफीक। उनका दूसरा चौका। सही लेंथ उन्हें मिली और भरपूर फायदा उठाया, सिर्फ टाइम किया शॉट को, ज़्यादा जोर नहीं लगाया और जुनैद खान की स्पेस के साथ कोई मुश्किलात नहीं हुई। एक अच्छा चौका हासिल किया, अच्छी फॉर्म में अब्दुल्ला, अच्छी इनिंग्स खेल रहे, लेकिन इस हदफ को पूरा करने के लिए एक पार्टनरशिप इन दोनों की बहुत ज़रूरी है। जुनैद खान को दबाव में ले आए हैं पहली गेंद पर बाउंड्री लगाकर। बहुत अच्छी क्रिकेट, आपको तवाज़ुन रखना पड़ता है अपनी बैटिंग में बाउंड्रीज के बाद जब अपने स्ट्राइक रोटेट करने की अहलियत हो। कामरान अकमल आज खतरे दब कर खेल रहे हैं। शुरू में इन्होंने पावर प्ले में वो अंदाज नहीं अपनाया जिसके लिए मशहूर हैं। पसंद है उन्हें जब बॉल बल्ले पे आ रहा हो, अच्छी विकेट हो, तेज़ विकेट हो। थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं, लेकिन इतनी आसान बैटिंग के लिए नहीं है, थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है, स्पिनर्स को ब्रेक भी मिल रहा है, उस तरह बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुहतात होकर खेलो। कामरान अकमल के लिए लेग साइड में स्क्वायर पर एक फील्डर है, ऑफ साइड में तमाम ही फील्डर दायरे के अंदर हैं, पांचों फील्डर्स। यही वजह थी कि विकेट में गेंद फेंकी, बल्ले और पैड दोनों से टकराई थी, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेंथ मौजूद थी, गैप भी था वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से खेलने चले गए बजाय टाइम करने के। कह सकते हैं कि एक चौके का मौका इन्होंने गंवाया। इस फील्ड के साथ जिसमें लॉन्ग ऑन है बाउंड्री लाइन पर, स्क्वायर लेग को भी हम देख सकते हैं बाउंड्री पर, थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर नहीं सकते कामरान अकमल को। अच्छी डिफ्लेक्शन, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहेंगे इफ्तिखार अहमद हैं, नहीं रोक सके कामरान अकमल को वो। दूसरी बार दौड़ लगाने से अच्छी लाइन लेंथ है जुनैद की, ज़्यादा रूम नहीं दे रहे, एक अच्छी लेंथ पे रख के बॉल करा रहे हैं। कामरान अकमल को अगर बहुत पीछे हो या आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर उनको शॉर्ट पिच लेंथ मिल जाए तो वो पक्का बाउंड्री होती है। फिलहाल यहाँ पे तो भी बॉलिंग हो रही है, एक्सपीरियंस काफ़ी है जुनैद खान के पास। और कामरान अकमल को उनके पास भी बहुत तजुर्बा है मरीना, उनको ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि आगे चलकर जूँ जूँ ये गेंद सॉफ्ट होगी, इस पर स्ट्रोक प्ले इतना आसान नहीं होगा। ये हमने पहली इनिंग्स में भी देखा है आज। यही वजह है कि अब बड़े शॉट आरामादा नज़र आते हैं कामरान। आज काफ़ी अहमियत की हामिल होगी ये पार्टनरशिप, और कामरान अकमल के लिए स्पेशली कोई बहुत बड़ी इनिंग्स अभी तक नहीं खेल पाए जिस तरह T20 में इनको हमें देखने को मिलता है। T20 में स्कोर करते रहे, पाकिस्तान की तरफ से भी झाराना क्रिकेट खेलते हैं, पसंद है इन्हें बड़े स्ट्रोक्स खेलना और बड़े दिलकश अंदाज में खेलना। और ये बहुत अहम मैच है सेंट्रल पंजाब के लिए। आज के बाद पहला मरहला उनके लिए मुकम्मल हो जाएगा। साधर्न पंजाब, सिंध, नॉर्दर्न और बलूचिस्तान के खिलाफ वो पहले ही खेल चुके हैं। बिल्कुल अपनी नज़रों के नीचे डिफेंड किया कॉपी बुक स्टाइल में अब्दुल्ला शफीक ने। मैच के बाद 34 पर 1। ओवर्स में 145 रन की ज़रूरत है सेंट्रल पंजाब को अपनी दूसरी कामयाबी के लिए। वहाब रियाज आए हैं अब, बड़ी तेज़ी के साथ रन हासिल किया। ये मैचअप होगा कामरान अकमल और वहाब रियाज का।
अगर दोनों पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं, लाहौर के लिए भी खेल चुके हैं दोनों एक साथ। लाहौर लायंस जिस ज़माने में खेलती थी नेशनल T20 कप, बड़ी तगड़ी टीम होती थी। रियाज को बहुत अच्छे से मालूम है कि कामरान अकमल के कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, अच्छी वेरिएशन करते हैं, अच्छी पेस के साथ यॉर्कर्स करते हैं। ये गेम फिर से करना पड़ेगी वहाब रियाज को। वहाब को देखते ही ये सवाल जहन में आता है कि ये सेंट्रल पंजाब के लिए क्यों नहीं खेलते। पिछला सीज़न इन साधारण पंजाब के लिए खेला था, ज़रूरत भी है सेंट्रल पंजाब को। मेरा ख्याल है कि पिछले बार सदर्न पंजाब में विकेटें हासिल की इन्होंने। सेंट्रल की जहाँ तक बात की जाए, एक्सपीरियंस की कमी है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब या तो आप दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बात जो है वो समझ में आती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी से इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान सुपर लीग में, हो सकता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस ड्रेसिंग रूम में। मोहम्मद हफीज़ भी पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं। बिल्कुल इनका जो सर है वो स्टिल रहता है ये अब्दुल्ला शफीक का, गो के फुटवर्क इनका बेहतर होता जाएगा जूं जूं ये क्रिकेट खेलेंगे आगे चलकर। और ऑफ स्टंप के बाहर अगर जो इक्का दुक्का इश्यूज हैं वो भी उनको भी ये हल कर लेंगे, उस मसले को भी, लेकिन सर स्टिल रहता है, ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है। बिल्कुल, स्पेशली जहाँ पे स्विंग हो रहा हो बॉल, वहाँ पे हेड पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नो बॉल की आवाज़ लगाई अंपायर फैसल अफरीदी ने। कामरान अकमल ने वार नहीं किया इस पर, शायद उन तक देर से पहुंची थी। वार का एक और मौका मिलेगा कामरान अकमल को, देखना ये किसका फ़ायदा उठाएंगे या नहीं। वहाब रियाज इस टूर्नामेंट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं नो बॉल के साथ, साफ नज़र आ रहा है कि ओवर स्टेपिंग हुई है। फास्ट बॉलर हैं, अक्सर होता है जब तेज़ बॉलर ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हों तो पाँव आगे निकल जाता है। और कामरान अकमल ने खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उनका बहुत बड़ा छक्का, पूरा फ़ायदा उठा लिया उन्होंने इस फ्री हिट का। ये नवी फ्री हिट थी जो वहाब रियाज ने ऑफर की। शानदार शॉट थी, भरपूर फायदा उठाया, थोड़ा सा रूम दिया और एक तरह से बेसबॉल शॉट कहें अगर इसको तो गलत नहीं होगा। मैक्सिमम के लिए कामरान अकमल, प्रेशर काफ़ी उतर गया होगा उन पे अब। जी हाँ, और कामरान अकमल अगर एक बार इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो खेलते ही जाते हैं। मोहम्मद इदरीस साहब कहा करते थे जावेद मियादाद के बारे में कि अगर एक बार वो खेलना शुरू करते हैं तो फिर वो खेलते ही जाते हैं। बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेलते थे जावेद। मेरा ख्याल अगर बैटिंग का आर्ट सीखना है तो जावेद मियादाद से सीखना चाहिए, किस तरह बॉलर्स के माइंड सेट से वो खेलते थे, उनके प्लान को चेंज करते थे, शॉट्स ऐसी खेलते थे जो उस टाइम पे बॉलर सोच भी नहीं सकता था, और इसके लिए बड़ा दिल ज़रूर चाहिए आपको। शानदार शॉट, निहायत आला टाइमिंग अब्दुल्ला शफीक की, बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। वहाब रियाज बहुत तेज़ बॉलर हैं और उन्हें स्क्वायर के सामने पुल कर दिया। इससे हम उनकी बालादस्ती का और एतमाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वक्त है इनके पास शॉट खेलने का। 5 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 45 पर 6 ओवर रादर।
अंपायर आफ्ताब हुसैन गिलानी ने अब नॉन पावर प्ले मरहले का यहाँ पर इशारा दिया और ये पंछियों के वापस लौट जाने का वक्त है। देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत शाम ढल रही है। हमारे दाएं जानिब हनीफ मोहम्मद इंप्लॉयर की छत पर बिल्कुल तिलाई हो जाता है पूरा आसमान मुल्तान का। अफरीदी को आज रेस्ट दिया, लेकिन अरशद इकबाल उनकी जगह पे आए। सेंट्रल पंजाब को प्लानिंग के साथ ये चेज करना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं है। बॉलिंग लाइनअप अगर देखा जाए केपी का जुनेद खान है, आसिफ अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, वहाब रियाज है, अरशद इकबाल भी है और शुएब मलिक हफीज़ भी हैं। फील्डिंग से इनकी कदर बेहतर है केपी की। कल के मैचेस में हमने काफ़ी ड्रॉप कैचेस और मिसफील्ड देखी थी। स्टैंडर्ड 50-50 रहा है इस बार टूर्नामेंट। जुनेद खान नाइब कप्तान भी हैं ये इस टूर्नामेंट में। शुरू के मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, वापसी हुई है टीम में। होल हार्टेड क्रिकेटर हैं, हमेशा 100% कोशिश करते हैं फील्ड पर कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हों। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट एक अरसे तक खेलते रहे जब मोहम्मद आमिर दस्तियाब नहीं थे। बहुत रन्स बनाते हैं स्क्वायर और उसके पीछे इतनी ज़्यादा विड्थ आज मिली नहीं है इनको। कदरे खामोश बैटिंग रही है अभी तक सेंट्रल पंजाब की भी, कामरान अकमल की भी। जुनेद खान की बात करें तो इंडिया के खिलाफ मोहाली में जो इन्होंने बॉलिंग कराई थी वनडे में, जिस तरह का स्विंग इन्हें मिला था, और सबसे बड़ी बात स्विंग को यूटिलाइज करना, वो भी एक आर्ट है। वह टीम है सेंट्रल पंजाब की जिसने 200 के खिलाफ 200 रन्स बनाए हुए हैं। मैच जीता था सदर्न पंजाब के खिलाफ। उसके बाद से इनकी जो बैटिंग है वो सर नहीं उठा सकी। सिंध के खिलाफ पंजाब की टीम थी, ये 154 रन्स बना सकी। नॉर्थर्न के खिलाफ 156 रन्स का कदरे आसान सा हदफ था, उसके जवाब में 120 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ये पहली टीम थी जो ऑल आउट हुई। ये सबसे कम स्कोर भी है चैंपियनशिप का 120। तो कल बलूचिस्तान के खिलाफ उनको सिर्फ 3 रन से शिकस्त हुई। 169 का हदफ था। कामरान अकमल तीनों नाकामियों में एक वजह था इनका जल्दी आउट हो जाना। रिलाई कर रहा है सीपी कामरान अकमल के ऊपर। अब्दुल्ला ने भी शानदार स्टार्ट किया था टूर्नामेंट का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे। पिंडी में बाबर आजम ज्वाइन करेंगे इस टीम को, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बैटिंग लाइनअप पर अगर ख़ासतौर पे बात की जाए। T20 के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं, टॉप बैटर हैं। 213 रन बना चुके हैं अब्दुल्ला शफीक, हाईएस्ट स्कोरर हैं टूर्नामेंट के। इमामुल हक ने 193 रन बनाए हैं। आज भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला। अगले ओवर में वही स्ट्राइक लेंगे। 7 के बाद 1 विकेट पर चमन। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं जहां पर फ्लड लाइट्स रोशन कर दी गई हैं।
बड़ा ही एक दिलचस्प सा मुकाबला हो रहा है। कामरान अकमल और अब्दुल्ला शफीक 48 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं। देखिए दिन ढलने का खूबसूरत मंजर है, आप बार बार देखते हैं, हर बार आपको ज़्यादा खुशी होती है इसे देखकर। तब्दील किया है आसिफ अफरीदी, पहले पवेलियन एंड से 2 ओवर कर चुके थे नई गेंद के साथ, अब वो आए हैं मीडिया सेंटर एंड से। और बड़ा शॉट खेल दिया, बहुत बड़ा छक्का अब्दुल्ला शफीक का। इस बार गेंद की पिच तक आए और पूरे कंट्रोल में दिखाई दिए शुरू से आखिर तक। खूबसूरत शॉट अब्दुल्ला की, कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा फ्लैटर बॉल था लेकिन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। फुल स्विंग ऑफ द बैट और 10 तरफ लगाने पड़ेंगे पीसीबी और टक को। थोड़ा सा गेंद से आखिर में अपने पैरों को दूर रखा ताकि हाथ खोलने का मौका मिल जाए। बड़ी आला बैटिंग अब्दुल्ला शफीक की। ये 13वां छक्का था सेंट्रल पंजाब का। बहुत कम छक्के लगाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में, आखिरी नंबर पर हैं इस एतबार से। नॉर्दर्न के बैट्समैन 35 छक्के लगा चुके हैं, साधारण पंजाब ने 31 छक्के लगाए। खैबर पख्तूनख्वा की टीम भी इस मामले में पीछे नहीं है। कामरान अकमल इस साइड में स्मैश किया एक और रन के लिए। T20 में आमतौर पर छक्के लगाने वाली टीमें ही कामयाब रहती हैं। वेस्ट इंडीज़ उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, 2 बार आलमी चैंपियन बनी मरीना। T20 में बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अगर आप बाउंड्री कंसीड करें, और उसके बाद कंटेन करना बॉलर के लिए मुश्किल होता है। दूसरी साइड पे बैटर्स को अच्छा स्टार्ट मिलता है, अच्छी रनिंग। इस बार लग रहा है कि कुछ चेंज ऑफ गियर्स हो रहा है सीपी के लिए। अब्दुल्ला और कामरान को एहसास है कि अगर ये टारगेट उन्होंने चेस करना है तो थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट इन्हें खेलनी पड़ेगी। आज उम्मीद की जा रही है आसिफ अफरीदी की तरह इनके जो दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जुहैब खान, उनको भी मौका मिलेगा। पिछले मैच में ओवर किए बगैर रह गए थे, लेकिन स्पिन नहीं हो रही थी, इसलिए अंपायर का फैसला बैट्समैन के हक में गया। 8 के बाद 65 पर 1, बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द क्रीज भी जाकर फेंकी थी। वाज़े तौर पर ये लेग स्टंप के बाहर निकल जाती। विकेट कीपर के भी झुकाव से अंदाज़ा हो गया था अंपायर अफरीदी को। 65 पर 1। No ball again to start off a brand new over. It's Wahab Riaz. 10th no ball in the tournament, so 10 free hits offered. He's looking at the big screen, Wahab Riaz. He wants to exactly know where he's going wrong. Another no ball from Wahab Riaz. He's feeling a little rusty getting into his groove this tournament. No ball again, that's 11. And it's wide of that fielder at mid-off. So they run a couple as well. Kamarako cleared the leg, front leg, and tried to go for a 6, but there you go, another no ball by Wahab Riaz. Another free hit for CP, and Kamarako will face another free hit. He's already hit 1 for 6. He tried again this one, well, he gets another freebie.
Doesn't get much out of that free hit on that occasion, Kamran Akmal. I wanted to clear that infield, that mid-wicket fielder. Well, this is exactly the start Central Punjab wanted. Their main two batsmen at the crease, well set. 109 more on the board in 12 overs. This pitch is usually much more quicker, but today it's coming on slow. It looks like the spinners are getting a little turned. And Zohaib Khan did not get to bowl last time. Asif Afridi they've relied on so far. And he bowls contained channel bowling, and he's done well so far. Wahab Riaz with the change of angle. Looks like he's hiding behind the umpire and just popping up in the last moment, trying to bowl around the wicket. Well, he bowled, what, 10 plus no balls this tournament. Just getting into his groove, Wahab Riaz. Played less cricket. Even in England on the tour, it takes a few games for fast bowlers to get into their stride, into their rhythm. Slow one again from Wahab round the wicket. 109 of 70, that's what Central Punjab means. He needs to get to this match with 71 for 1. So it's looking all right. Kamran Akmal is out there. So is Abdullah Shafiq. So Central Punjab won't have any panic buttons in the dugout. Whoa, white ball from Wahab Riaz right there, trying to get that quick bouncer in. Attempted to be right at Kamran Akmal's grill, but a little wavered. Now just noticing how Central Punjab is once again in a good position to win this game. They were in similar position yesterday with less wickets in hand, with Abdullah Shafiq being set. They're in good position to get these runs again this time. You can just notice, Sikandar, how Kamran Akmal has taken his time today. He looked good yesterday, a little agitated in the first few games, but yesterday he was getting bat on ball, he was looking solid till his dismissal, and he just carried on that. This is what happens when you play these small innings. You can just build that confidence up. You can just tell that things have started to shift, and it just looks like he's feeling a little bit more comfortable at the crease. He's taking his time. He wants to be there and end these dead overs today. Ball is for 2. Can they push harder? That's Abdullah Shafiq coming back. That's a good call. And well responded by the partner as well. The 2 always available because the onside field and the deep is right at the rope. So it takes a fair bit of time to get to the ball. I'm just loving their chemistry running between the wickets. They had a good partnership first game of this tournament. And once again, they both are set. They like playing with each other. They complement each other. Just look at that. Beautifully balanced, placed in the middle. Kamran saw the ball and he just sprint at it. CP not in any kind of rush. 75 for 1 after 9. Deliveries in the previous over from Wahab, 2 no balls and a wide. But he still managed to avoid those big hits and the free hit opportunities came. He's given 10 of them in this tournament up till now. He's clearly not finding his rhythm in terms of run-up, in terms of landing that front foot, the popping creases, not being very friendly. Sun setting in the background here in Multan as the floodlights take over. And after Wahab Riaz is Zohaib Khan,
He's been brought into the attack, the left-arm orthodox. Ball round the wicket. One. Call is for two because a little wide of that fielder in the deep. Slight hesitation. They managed it over the fumble in the deep. Watch out for this matchup, Sikandar. Zohaib Khan getting to bowl finally against Kamran Akmal, who plays spin exceptionally well. You could just see the running between the wickets that he wanted to come back on strike. And a fumble by Asif Afridi, a long off, got him back there. Now, you know Kamran Akmal has that sweep up his sleeve. He also has that cut shot, but he also comes down the ground really well. That's his go-to shot against left-arm spin. Inside out, he loves that. Very unforgiving to them. Every time you bring on a left-arm spinner, you've got to be careful because that's the region he eyes. And he's played 2 shots there and he's got himself 6 runs. Just juicy from Zohaib Khan right there. He knows Kamran Akmal wants to put him under pressure and is on attack mode. And just giving that freebie to Kamran Akmal to just open up his arms. He just placed it wherever he wanted for a good boundary. That's well stopped there in the deep. Oh, he wants the second one, Kamran. But Abdullah Shafiq was well planted in his crease. Was hit very hard. That's good fielding there. As Shafiq goes, his turn, Sikandar. Very. I just have a feeling that the way Abdullah Shafiq has played in run chases, he favors batting second. It just feels like just having runs on the board, knowing his target, knowing on what pace to go, suits him. He's now down to 2 figures in terms of runs required, 96 of 61. Last 10 overs. With 9 wickets in hand, you take the opposition on. Once again, that's the shot he goes for. 1 bounce to end the over. That's another boundary. Good over for Central Punjab. It is, with that shot, 83 for 1. That's Central Punjab being asked to chase 179 to win this match. That's one of the final evenings here in Multan. After this we move to Rawalpindi, so we get the opportunity to watch the sunset here in the background. We only come back here when international cricket invites Zimbabwe to come here and play the first ODI on the 30th, on the same ground. Beautiful pictures there. I mean, it's a full house, it's loud, it's electric. We saw that in the PSL. Huge support for Multan Sultan. Speaking about coming back to Multan, we're going to Pindi next, and it was a beautiful first half here in Multan Cricket Stadium. We're just noticing how PCB is going to announce the team for Zimbabwe, the T20 International and One Day International on October 19th. This is a great opportunity for any player who's already performing well, like Abdullah Shafiq is. He's playing consistent cricket, he's batting well, showing good intent in every single game.
this is the stage where if he leaves a mark, end of the tournament, if he's in the highest run getters, he can get that call up real quick. Only last season, he just played one first-class match. But now going into Pindi with the selector, Misbah-ul-Haq, the head coach, being there in the cricket ground, those are the eyes you want to catch. That's in front of him, performing live in front of him will make an impact. Not just for him, for any upcoming player who's willing to leave a mark. Looks like they've brought in Iftikhar Ahmed into the attack. Kamar Akmal has played well today. Sikandar, 41 of 32. Taking more time than usual than he does. Just wants to be at the pitch, at the crease today, it feels. If you look at what's been happening since afternoon when the game started, the batsmen will go for big hits, not really finding the ball coming right onto the bat as easy, which is why we've been emphasizing on the fact that only 36 were scored in the last 5 overs, with Iftikhar in form and Shoaib Malik were around. No maximums in this last 5 overs. So similarly, things haven't changed for Central Punjab and the bat. Playing according to the situation, you see it comes down the wicket, but the ball is not reaching them. See, this is why I always talk about momentum in T20 cricket, Sikandar. Last 5 overs where Iftikhar and Shoaib Malik could have gone on to another gear, they couldn't. So there was a little mini win for Central Punjab right there. Going into their batting with limiting the boundaries in the last 5 overs and having this excellent start right now with batting in hand with their 2 set batsmen at the crease, willing to bring this game home. It's only 9.5 required from now. And if Kamar Akmal is going to be there, Abdullah Shafiq is going to be there, they're going to finish the game off maybe 2 overs early. Big hit by Kamar Akmal there. They're trying to get a cheeky wicket real quick with bringing Iftikhar Ahmed on. But just for a single, Sikandar. You know, KP looks a bit jet-lagged. They had their opportunities some time back. Wahab Riaz in the deep didn't attempt the catch. It seems like there are opportunities, half a chance. This time it's been played so nicely. He loves playing that shot. Both these batsmen complement each other. Full toss, dispatched in the gap. These boundaries are valuable. So valuable when runs are not coming that easy. Just helps your cause in the chase. End of the over with that. 96 for 1 after 11. Shoaib Malik into the attack. You sense it that Kamran Akbar will go after him. High, the mid-wicket area. Just to the right of the long fielder at the rope. Good. Also very good in making room for himself very quickly. He's quick on his feet. And play that over, that short extra cover, Mohammad Hafiz as well. Hasn't been the regular option, Shoaib Malik, for KP, but since the breakthrough is not coming, why not? That's the region he will target. That's the region he will target. Told you so. Boundary to start. Interesting change by Mohammad Rizwan there. First ball, Kamar Akmal always taking the bowler on, trying to maybe buy a wicket by introducing Shoaib Malik. None of them main bowlers, as you see, just hopping down the crease, hitting in his favorite area, throwing his hands at it for a boundary, putting automatic pressure onto the bowler after the first ball. But yeah, just bringing in a part-timer. Shoaib Malik has not bowled
this tournament that many overs. They also have Mohammad Hafiz in the lineup that can also roll his arm. All that experience. Interesting contest this, because Malik is not going to make it easy for Kamran. He'll try to follow him. Bit of chat going on between Kamran and Malik. He's going to invite him. Let's have you go for the big one again. Let's try it out. Let's see if you can hit me for another boundary. Going for the catch, and he's been given. Well, you just see that's a soft dismissal there. It was way down the leg side. He was trying to reach, get hold of it on the bat, and got nothing but to the keeper, his gloves, and that's the end of Kamran Akmal. Have a look at this. Just seeing the banter is on at the same time. The wicket celebration by Shoaib Malik just shows how delighted he is getting his pal Kamran Akmal out early after a boundary. As you saw last ball, just by that celebration, how much this wicket means to Shoaib Malik. This is why Rizwan brought him on. He wanted to get a quick wicket, trying to get that hit all maximum through the part-timer, but just got him. Kamran Akmal gone for 47 of 37. 99 for 2, CP. Left-handed Rizwan Hussain is here, and he's here because Kamran Akmal attempted a way wide delivery down the leg side. He's unlucky to get a bit of wrist onto it. Look at that. It's there to be hit. Or could have been left alone. That would have been a wide. But the joy on Shoaib Malik's face, he's on top of the moon. Because he challenged him at just a delivery before. He's going to try and get him. Look at that. The ball never arrived. He went through with the shot. Nicely flighted up in the air, let Kamran Akmal watch that ball. Deliberately slowed down the pace. Just see by the excitement, just the bragging rights, going future, talking tonight, like how I got your wicket. Just see, like they're trying to find excitement in these matches. They play for so long against each other. They know all their ins and outs about one another. But just getting the wicket just meant so much for Shoaib Malik there. Exciting to see, and how much they love this game already and so far. Well, all said and done, the partnership is broken. That's important from KB's point of view. And they've got rid of the dangerous Kamran Akmal. So now a lot relies on Abdullah Shafiq and the man who's in now, Rizwan. He can get a quick fire, 20 odd. Keep them in the chase. He goes big. That's how he plays. Keep them in the chase. That's a big six. He's absolutely smoked that. Intent by Rizwan. Second ball in his slot, and just threw his hands with positivity for a maximum. Just see, it was in his slot. He shows how positive he is. And just first ball, first runs on the board with a 6. With that, 10 more trees will be planted by Tuck and PCB. Rizwan looks ready, Sikander. Bang! Once again. It's probably even bigger. Back-to-back sixes from Rizwan. End of the over. It just races the Central Punjab to 111 for 2 after 12.
ओवर्स में 68 रन की ज़रूरत है। कुछ देर पहले तक जो रिकॉर्ड रेट थी वो डबल फिगर में आ गई थी, लेकिन रिजवान के 2 छक्कों ने इससे एक मतलब फिर काफ़ी हद तक वो नीचे ले आए। बदकिस्मत रहे अच्छी गेंद नहीं थी जिस पर आउट हुए। उसके बाद शोएब मलिक ने इसका शुरू से आखिर तक जश्न मनाया। दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती है। बॉलर और बैटर में जब इस तरह का चैलेंज चलता है तो काफी मजा आता है। देखना यह है कि जो बाकी मादा बैट्समैन हैं सेंट्रल पंजाब के, ये नौजवान हैं, इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है मैच को फिनिश करने का कि आपने आसाब पर काबू रख सकेंगे। अच्छा स्ट्रोक खेला, इस बार क्रीज से निकलकर सिंगल पिंच किया। तो अब्दुल्ला शफीक रन्स बनाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह कामरान अकमल उनके गिर्द खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये रन विनिंग रन होंगे, लेकिन वही तजुर्बे की कमी आड़े आ जाती है जब कोई ऐसा खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द नहीं होता। टैलेंट इसमें मौजूद है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मैच विनिंग टेम्परामेंट आना, जैसे जैसे आप मैचेस ज़्यादा खेलते हैं इसके साथ साथ आपको आता रहता है, मैच्योरिटी भी उसी टाइम आती है। लेकिन जिस तरह का इनका एटीट्यूड है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, शॉट्स नहीं रोकते, सिचुएशन को समझ के खेलते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। और अभी रिजवान पे काफ़ी रन्स ड्यू थे, उन्होंने भी आते ही जिस तरीके से स्टार्ट किया है सीपी के लिए अच्छा है। आगे आने वाले बैटर्स में जफर गौहर को हमने देखा कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, कासिम अकरम है। एक प्लानिंग के साथ चले तो ये टारगेट चेज कर सकते हैं। गेंद भी बल्ले पर आ रही है, पहली गेंद इनिंग्स से इस बार एलबीडब्ल्यू की बहुत जोर से अपील की, तकरीबन एहतजाज किया, आखिर में मुड़ के और अंपायर ने देर से आउट करार दे दिया। रिजवान की इनिंग्स का खात्मा हो गया। 2 ओवर्स में 2 विकेटें मिल गई तो मैच बहुत दिलचस्प हो गया। ज़्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते, फ्लैट गेंद थी, बहुत नीचे लगी नी रोल के। देखिए ये विकेट कीपर और बॉलर आखिर में ऐसा लग रहा था जैसे एहतजाज कर रहे हैं। रिजवान गए 12 पर, 112 पर 3। नसीम कप्तान है सेंट्रल पंजाब के, उन पे काफ़ी जिम्मेदारी आती है कि इस रन चेस को जिंदा रखे। कामयाबी हासिल की, ये विकेट ऑफ स्टंप पे वॉक किया, लेग साइड पे मारना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन ना बना सके और आखिरकार शदीद अपील के बाद अंपायर ने आउट दे दिया। 44 गेंदों में 67 रन, बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस टीम को इस तरह पहले बताया गया जीत की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। इससे अक्सर होता है कि ऐसी टीमें जीते हुए मैचेस गंवा देती हैं, कल भी ऐसा ही हुआ था। इनकी जो गाड़ी है ये 10वें से 15वें ओवर तक ये पटरी से नीचे आती है सेंट्रल पंजाब की। पहले 10 ओवर्स ये बेहतरीन अंदाज में निगोशिएट करते हैं। आज उम्मीद करेंगे इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं कि अब्दुल्ला शफीक ये शुरू से आखिर तक जाएं। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये चेस करना चाहते हैं। अब्दुल्ला शफीक की खासियत है कि वो डॉट गेंदें बहुत कम खेलते हैं। अगले ओवर में वही स्ट्राइक लेंगे 114 पर 3।
इमरान अकमल के 47 रन पर आउट होने के बाद मैदान में केपी के बॉलर्स और फील्डर्स का मूड और माहौल बिल्कुल बदल गया है और खुद को खेल में महसूस कर रहे हैं। वापस आ जा रहा है इस वक्त अरशद इकबाल को बॉलिंग करने के लिए फार एंड से। सेंट्रल पंजाब का जो अलमिया है वो ये रहा है कि स्टार्टिंग में अच्छी पार्टनरशिप लगती है हर मैच में, लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरती है उसके फ़ौरन बाद दूसरी विकेट और फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। और T20 ऐसी गेम है कि अगर कोई बैटर सेट हो गया है स्पेशली उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि फिर पूरी इनिंग्स खेल जाए। और केपी के जिस तरह के बॉलर्स हैं इतना आसान नहीं होगा अभी भी सेंट्रल पंजाब के लिए चेस करना। मरीना ये 7वां दिन है, आखिरी दिन है जो मुल्तान की लेग है। अब्दुल्ला शफीक के अलावा आपको और नया टैलेंट कैसा लगा है, किस किस को आप गिनती में लाएंगी? नया टैलेंट काफ़ी देखने को मिला है। ज़्यादा मुझे जो खुशी है वो ये कि हैदर अली, निशान मलिक, निशान अशरफ जैसे प्लेयर्स उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है। T20 खेलना आसान नहीं होता, आपको एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ता है, रन रेट मेंटेन करना पड़ता है। स्टॉकिंग मुझे बहुत कम नज़र आई, टेक्निकल बैटिंग नज़र आई जिसकी ज़रूरत होती है T20 में स्पेशली। बैटर्स में अगर मैं बात करूँ तो ये तीन जो है और साथ अब्दुल्ला शफीक ये टॉप पे है। ये अपने नॉन बॉलिंग आर्म का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते अरशद। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनकी तेज़ रफ्तार ना होने की एक वजह ये भी हो क्योंकि बॉलिंग कोचेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल होना चाहिए गेंद डिलीवर करते हुए। क्रीज पर उससे ज़्यादा अच्छा तवाज़ुन भी आता है फास्ट बॉलर का। मोमेंटम बनता है आपका, जिस डायरेक्शन में नॉन बॉलिंग आर्म जाएगा आपको बॉलिंग आर्म भी वहाँ फॉलो करता है और उसी स्पीड से फॉलो करता है। साइड में खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, इम्पैक्ट नहीं, अंपायर ने आउट करार दिया। LBWs की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि गेंद कल से नीचे रहना शुरू है। यहाँ यही फैसला अंपायर को करना था कि आया ये स्टंप्स के बाहर इम्पैक्ट हुआ था या नहीं। सेंट्रल पंजाब को एक और झटका, शॉट मारना चाहते थे, पिकअप शॉट, लेकिन काफी क्लोज कॉल थी और आउट दिया गया काफी पुरजोर अपील के बाद। हाँ, और अभी तक खुश नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं मायूसी के आलम में। अब्दुल्ला शफीक जिन्हें बड़ी अच्छी बैटिंग की, 43 रन बनाए 116 पर 3। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिला है जफ़र गौहर को। कल इन्होंने अच्छा मुकाबला किया था, शाम के वक्त खेल रहे थे बलूचिस्तान के खिलाफ, अच्छे ऑलराउंडर रहे, हालिया दिनों में फिटनेस मसाइल का भी शिकार रहे। गौहर ने जिस तरह की इनिंग्स कल खेली है आज दोबारा उम्मीद करते हैं किसी तरह की खेलें और अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जाएं। लेकिन फिलहाल जो मैच का बैलेंस है वो केपी की तरफ है। अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी फील्डिंग की है, विकेट सही मौके पे हासिल करते रहे हैं। देखना ये होगा कि साद नसीम जो कि कप्तान है और जफ़र गौहर टीम को कहां तक लेके जा सकते हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन को ज़्यादा इन स्विंग करते हैं अरशद इकबाल। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए वही गेंद एंगल के साथ कई बार बाहर निकलती तो आसान नहीं होता। जफ़र गौहर जो हैं ये बासलाहियत क्रिकेटर हैं। 2014 का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को जितवाया था दुबई में। हर तरह की शॉट्स इनके पास मौजूद हैं।
रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बड़ी अच्छी करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इस वक्त ऐसी ही अच्छी इनिंग्स की जरूरत है सीपी को। एक और अच्छी डिलीवरी, इस बार फिर अटेम्प्ट किया ऑफ स्टंप के बाहर। ये खाली जाती हुई गेंदें मुश्किल का सबब ठहरेंगी सेंट्रल पंजाब के लिए, यही बताने के लिए गए हैं कप्तान साद नसीम जफर को। मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, छक्का हासिल करना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं बना सके अरशद इकबाल। ये अच्छी बॉलिंग रही है अब तक। आज एक मतलब फिर वही हो रहा है, ये जो 10वें से 15वें ओवर तक का मरहला होता है, ये हमेशा मुश्किल सफ़र साबित हुआ है सेंट्रल पंजाब के लिए। 2 सेट बैट्समैन के आउट होने के बाद मुश्किलात का सामना है, कोशिश कर रही थी लेकिन हर वक्त आ गए वहाँ पर मोहम्मद रिजवान। 14 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 117 पर 4। मैच का फिलहाल जो सूरत हाल है आपके सामने, सेंट्रल पंजाब भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है चेस करने में। हैबर पखून खान ने टॉस जीता और अच्छी बैटिंग रही। शेख मलिक, उस्मान, आसिफ, फखर। सेंट्रल पंजाब इस वक्त ताक पे है। कैमरान अकबल की अच्छी ओपनिंग थी, अब्दुल्ला, लेकिन फिलहाल मुश्किलात का सामना है सेंट्रल पंजाब को। ये इस वक्त अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इस मैच में चेजिंग को खास कामयाब नहीं रही सेंट्रल पंजाब की। एक मौके पे इन्होंने सक्सेसफुली चेज किया था। आज इस मैच का क्या अंजाम होता है ये देखते हैं। जुनैद खान आ गए हैं, अच्छी बॉलिंग फॉर्म में लग रहे हैं जुनैद। सामने 2 निस्बतन नए बैट्समैन विकेट पर हैं। साद नसीम ने 2 गेंदें खेली हैं, जफर गौहर ने 3 गेंदें खेली हैं। बहुत बाहर थे ऑफ स्टंप के, अंपायर को दबाव में लेने की पूरी कोशिश की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। और लेग बाई के 4 रन्स मिल गए। ज़रूरी चौका रन्स चाहिए इस वक्त आप किसी भी सूरत में मिलें सेंट्रल पंजाब को। पहली बॉल पे बाउंड्री, दूसरी दफ़ा देखे हमने जुनैद खान ने कंसीव की है और ये लकी रन्स है जो सेंट्रल पंजाब के लिए। प्रेशर वापस बॉलर पे आ जाता है। अच्छी अटेम्प्ट थी, फील्डर भी मौजूद था, जो रिजल्ट चाहते थे वो हासिल किया, कनेक्शन बेशक ना हुआ। जफर गौहर जब इतना ज़्यादा शफल करके आगे चले जाते हैं, बल्कि चल कर आगे चले जाते हैं, तो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनके पैड्स ऑफ स्टंप के बाहर रहें ताकि अगर गेंद वहाँ लगे भी तो LBW ना हो। पूरी हिकमत अमली नहीं है। डीप कवर पर एक फील्डर हैं, डीप थर्ड मैन पर ऑफ साइड में लॉन्ग ऑन पर हैं, लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में खेल दिया। इफ्तिखार अहमद ने ये कैच ले लिया और जुनैद खान को आज की शाम की पहली विकेट मिल गई। सेंट्रल पंजाब के लिए मजीद मुश्किलात। जफर गौहर से उम्मीद की जा रही थी कि कल की तरह वो शानदार इनिंग्स रिपीट करेंगे, लेकिन नाकाम रहे। पुल करना चाह रहे थे, बॉडी में बॉल आई और अच्छा कनेक्शन नहीं बना सके और एक आसान कैच। केपी के लिए जीत जो है वो अब यकीनी होती जा रही है और सेंट्रल पंजाब की मुश्किलात में इजाफा। कासिम अकरम आज अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग से खुद को मरवाया है, लेकिन यहाँ बाउंड्रीज की ज़रूरत है इनसे। हमेशा जब भी आए हैं दबाव में ही इनको खेलना पड़ा है कासिम को। नौजवान हैं, अंडर 19 क्रिकेटर हैं। ये विकेट एक बार पुल करना चाहते थे लेकिन
जुनैद खान ने मेक श्योर किया कि कामयाब ना हो, हासिल की विकेट। केपी की काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही है, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कराते रहे, सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग कराते रहे। सेंट्रल पंजाब इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है टारगेट चेस करने में। इस वक्त 4 फील्डर दायरे के अंदर हैं, बैट्समैन की बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और 4 रन्स मिल गए। कासिम ने गेंद को देर से खेला, फाइन लेग के फील्डर से फाइन, और अपनी टीम को बहुत ज़रूरी बाउंड्री दिला दी। सलाहियत मौजूद है कासिम अकरम में, हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार साथ नसीम के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। बाकी रन्स कह सकते हैं सेंट्रल पंजाब के लिए प्रेशर थोड़ा ऑफ हुआ होगा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जुनैद खान गेम को रिवर्स करने की भी अहलियत रखते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्योंकि आउटफील्ड बहुत लश है, ऐसा होते हुए हमने कम देखा है। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, बिल्कुल जी जान से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा किसी भी टीम के लिए खेल रहे हों, किसी भी फॉर्मेट में। टूर्नामेंट के स्टार्ट में बैटर्स के चर्चे थे और आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग साइड को मोमेंटम मिल रहा है, बॉलर्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है। आज आखिरी दिन मुल्तान राउंड आज खत्म होगा। यहाँ साथ नसीम को जिम्मेदारी लेना होगी, क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, टीम के कप्तान भी हैं। अभी तक इनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल किसी कप्तान के शायान शान नहीं है। तो आज मौका है मुल्तान में फिनिश करने का, जो मुल्तान की मुहिम है उसको। काफ़ी खामोश कप्तान रहे हैं, बैटिंग में भी ज़्यादा नहीं दिखा पाए और सेंट्रल पंजाब के लिए एक तवाज़ुन अभी तक हासिल नहीं कर पाए। हालांकि अच्छे नाम, बड़े नाम है इस टीम में, लेकिन कामयाबियाँ उस तरह नहीं नजर आई इस टूर्नामेंट में उनकी तरफ से। बिल्कुल रिवायती सी फील्ड रखी गई है साथ नसीम के लिए, जो लेग साइड में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से फैच किया लेग साइड में, अगले ओवर में वही स्ट्राइक पर भी आ जाएंगे। 127 पर 5। सेंट्रल पंजाब की टीम रास्ता भूल रही है मुल्तान में। एक बार फिर 5 ओवर्स में 52 रन की ज़रूरत है, लेकिन विकेटें दोनों एंड्स पर गिरती जा रही हैं, इसलिए मोमेंटम जो है वो केपी के साथ है, जिन्होंने इससे पहले 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हासिल किए। बलूचिस्तान के भी 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। नॉर्दर्न की टीम सर फहरिस्त है, उन्होंने 4 मैचेस खेले, चारों जीते और 8 पॉइंट्स हैं। सिंध और पंजाब के इससे पहले 4 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं। पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है आज 2 पॉइंट्स हासिल करना, अगर इनमें सेमीफाइनल की दौड़ में रहना है। विकेट कीपर के सामने से निकालना चाहते थे, लेकिन शॉट ज़्यादा देर से खेले, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन खेल गए। इस एंगल से वहाँ बॉलिंग करा रहे हैं, थर्ड मैच तरफ खेलना आसान होगा विद एंगल ऑन द विकेट, आके विकेट्स को टारगेट करते हैं। अच्छा यॉर्कर अच्छी पेस के साथ बॉल कराते हैं। पंजाब की टीम की जो कमज़ोरियां सामने आ रही हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि लाहौर से अब वैसा टैलेंट सामने नहीं आ रहा, क्योंकि गढ़ है पंजाब में लाहौर क्रिकेट का, वहाँ से उस म्यार के क्रिकेटर सामने नहीं आ पा रहे जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हम देखा करते थे।
और इस बार हवा में और बिल्कुल तरने वाला, कोई गलती नहीं की वहाब रियाज ने। साद नसीम दोबारा नाकाम रहे, वापस इस डगआउट की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर मायूसी छाई हुई है। अच्छा बॉल था, सही एक्सप्रेस पेस के साथ कराया और ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ टॉप एज हुआ। इजी कैच वहाब के लिए। इस वक्त सेंट्रल पंजाब के पास कोई प्लान नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा जोश भी के वो चेस करने के लिए जा रहे हैं। 128 पे 6 सेंट्रल पंजाब। एक 128 पर ये छठी विकेट गिरी है अभी, और बिलाल आसिफ को आना पड़ा, जो कि अच्छे स्ट्राइकर हैं। सेंचुरी भी बनाई हुई है T20 में फैसलाबाद में। मुझे याद है जब ये सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेला करते थे, अपने T20 डेब्यू पर सेंचुरी दाग दी थी। बैटिंग से नावाकिफ नहीं है। बैटिंग से नावाकिफ तो सेंट्रल पंजाब में कोई भी नहीं है। ये देखिए बॉल ऑन साइड पे फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी पेस थी, बॉडी में बॉल था। इजी कैच वहाब के लिए। टैलेंट होना एक चीज़ है, लेकिन एक्सिक्यूशन ज़रूरी है। या एंगल के अगेंस्ट अपने बल्ले को क्लोज किया था। उससे आसान सा कैच कासिम ने पेश किया वहाब रियाज को। 28 गेंदों में 51 रन की ज़रूरत। तो उसी बात पर वापस आते हैं कि लाहौर से मोहम्मद यूसुफ के बाद से हमने कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आते हुए नहीं देखा। सकलैन मुश्ताक के बाद से एक वर्ल्ड क्लास हमने अब तक स्पिनर नहीं देखा। इस बार खेल दिया ऑफ साइड में 4 रन के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक था बिलाल का। बाबर आजम ज़रूर आए हैं, वो इन दिनों उभर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। उनका ताल्लुक लाहौर से ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट इस्लामाबाद से खेली थी, इसलिए मैंने बाबर आजम को उस फहरिस्त में शुमार नहीं किया। आपने तो कमेंट्री बॉक्स में हलचल मचा दी ये बात करके। अजहर अली भी बहुत ताक से देख रहे हैं आपको। और बोल्ड कर दिया। इस बार बहुत पीछे चले गए थे, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज किया और वहाब रियाज ने इसे निशाना बना लिया। 132 पर 6। एक और शानदार बॉल, बिल्कुल समझ से बाहर थी ये बॉल। गाइड करना चाहे थे थर्ड मैन की जानिब, लेकिन अब रियाज का निशाना बहुत पक्का है। डीप क्रीज में थे, अच्छी लेंथ की विदिन विकेट्स। और सेंट्रल पंजाब अब फिलहाल लग ये रहा है कि मैच ख़त्म करने के लिए जल्दी में। नो बॉल चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाब रियाज ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी की, लेकिन इस बार सेफ रहे। बिलाल आसिफ लौटेंगे वापस, 4 रन बना सके सिर्फ। वहाब रियाज की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। सेंट्रल पंजाब 132 पे 7। जहाँ उस्मान कादिर, इनमें बड़े शॉट खेलने की अहलियत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग लाइनअप है एक मतलब फिर भंवर में आ गई है। और वहाब रियाज इस तरह के हालात में बॉलिंग करना जानते हैं। राउंड का विकेट आएंगे वहाब रियाज लेफ्ट हैंडर को गेंद करने के लिए उस्मान कादिर को।
मुश्किल एंगल होता है ये, लेकिन वहाब रियाज विद ऑल एक्सपीरियंस सेंट्रल पंजाब को सोचना पड़ेगा, क्योंकि किस हिकमत अमली से आगे अगले राउंड में मैदान में उतरे। बाबर आजम ज्वाइन ज़रूर करेंगे, लेकिन टीम के बाकी प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। टैलेंट भरपूर मौजूद है, लेकिन बॉलिंग साइड बैटिंग साइड में 2-3 लोगों को जिम्मेदारी लेके रोल डिफाइन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा फ़िलहाल सेंट्रल पंजाब के पास कामयाबी का कोई रास्ता नजर नहीं है। बैकफुट पर खेला, दूसरा रन लेना चाहते हैं, इसका बिल्कुल मौका नहीं दिया। अच्छी फील्डिंग देखने में आई। 16 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 134 पर 7। The wickets, dots increasing as KP's bowling has really tightened the screw. Got a quality bowling attack. So in the first innings, when KP batted, last 4 overs just went for 23, and there was maybe people were questioning why that happened. Got Azhar Ali with me. It just feels as once that ball loses its hardness, it's difficult to, on this pitch especially, with the ball not really coming on. Obviously, there's a lot of matches being played on the square. Maybe the pace has been lost now in these pitches. Yes, we've seen in KPK's innings also, and Kamran Akman and Abdullah Shafiq look good, but since the ball has got older, the pitch also is not very quick. Ball is not coming onto the bat that easily, and once your set batsman goes, it's hard for the new guys to come in and time the ball. That is seen in the KPK's inning as well. And back of a length, short of a length is the length to hit. You don't want to be too full because you'll allow the batsman something to hit. You hit the wicket hard, not a lot of pace off the wicket, so timing is a problem. And also the bounce, it does not bounce where it should come. Usman was expecting the ball to come a lot higher than it did. Nearly take the bails off. It's the right kind of length to bowl. Just a single down to third man. Before the tournament, you looked at two teams which had real quality in their bowling. You looked at obviously Northern, who has international bowlers for fun, and then you look at KP. They've got like, well, Shaheen Shah Afridi is not playing, Wahab Riaz, Junaid Khan, and today they've dropped Shaheen Shah or rested Shaheen Shah Afridi, and Arshad Iqbal comes in and he's done a job. He's just gone for 14 in 3 overs. These two bowling sides, they are both the best in this tournament, and they showed it's not only on paper, it's actually again that short ball, realizing that that is the length to bowl. And it is not too short as well, so it's a heavy length, like where you want to make sure you hit the thigh of the batsman. If you bowl it too short, it will sit up very nicely, but that's kind of right length. It's just hitting the
eye of the batsman, which doesn't bounce that much, and you don't really get underneath that. The slowness also helps the bowler. Usman Qadir launches this slightly fuller from Junaid, and it's been dispatched. One bounce into the fence. As we were discussing earlier, the fuller you get, it's easier to hit. Either you bowl a Yorker, that was right in the slot. And Usman Qadir, even though he would just come in, managed to smash that over mid-wicket. And the other factor is that there's so much experience in the side. So now Hafiz comes and has a chat with Junaid Khan. Junaid Khan himself very experienced, so you can't really go wrong in T20 if you have that sort of experience. You've played in every sort of game and you've experienced all sort of pressure. Goes short again, top edge, Rizwan getting underneath this. Short of a length work, Junaid Khan has his man, Usman Qadir departs. Trying to repeat his shot the ball before. And it was high on the bat. And Rizwan took it very nicely. Called it early. You don't want a collusion because it was a simple catch, but you need the clear calling. Usman Qadir goes for 6. And 1-4, 1-for-8, Central Punjab. Ehsan Adil walks in. Pressure being applied by KP. The bowling has been fantastic in the final 10. Short of a length. Trying to pull this on the leg side. Just a huge top edge, and Rizwan, well, he's not dropping that. Well, Saad Naseem is the lonely hope now for CP. Everything he has to do on his own now. It's a tough ask. 38 of 17. Bang it into the wicket, and it's working. And right now, Captain Courageous Rizwan is very satisfied with the bowling unit. Rashid Iqbal. Starts off his 4th over. He's just gone for 15 now, and he's into his final over. He's bowled really well. Yeah, he's been impressive. He came in place of Shaheen Shah. Big boots to fill, but he's done a great job. Northern guys are already here. They're just dominating this tournament so far. And knocks him over. Length ball back into the stumps. Wild swing doesn't work. They're finding the right length on this pitch. You can see the ball is not really coming high enough. It just kept a little bit low. But Ehsan Adil was in no place to hit that ball. He did not disturb the scoreboard.
CP is 1 for 2 for 9 now. Bashir walks out to the middle and all but lost this game. Still got his captain with him. All he can do is just rotate the strike, give Saad Naseem the strike, see what he can do. A terrific bowling ball, angling back. He's done this all day, tap the stumps. Yeah, but CP should not give it up now. Right now, there's only 1 wicket left. But even though if they don't cross the line, they should get close to it, because run rate still get very close at the end. And if you want to go into the semi-finals, you want to score as many runs right now. Another terrific delivery, goes to the offside for 1. How important was it? Shaheen Shah Afridi being rested. The one just skidding through, got the wicket. That Arshad Iqbal came in and did a job. He did do that job, but also how important was it that he was Pashto speaking as well? Because Rizwan loves a bowler who speaks Pashto. He can guide him throughout the innings. And you had a word with him in the test series where you couldn't understand what he was saying. Yeah, of course, and I had to tell him, at least I must know what you're saying to him. Driven through the offside, and that'll reach the fence. A boundary to end the 18th. It's 147 for 9. It was a wide full toss. Saad Naseem picked the gap very nicely. It's a fast outfield. You actually can use the square boundaries rather. The next match coming up. That's 32 needed of 12. Tough task for Central Punjab, but Ahmed Bashir would look to give strike to Saad Naseem. If they can get somehow close to 20 runs for the last over and Saad Naseem on strike, then again we can have game out of it. Slip in position. Wahab Riaz is about to take off. Bowling from round the wicket. The angle takes it to the leg side, down the leg side. He wants the ball to straighten slightly. He's got that man at a wide-ish slip, so looking to dismiss the number 11. Yeah, I have a feeling he will target the stumps. He's coming round the wicket, but his ball will go away from Ahmed Bashir. Yeah, too quick. It's just been a high soaring bowling performance from KP. Got quality in the bowling attack, but they delivered. And if you looked at it up front, you said 179 is not a huge total going by the major matches that we've seen. But this bowling attack and the experience of the unit knew that it was enough, and it was a good score as they assessed the conditions quickly. Also looking at the Central Punjab's batting, they have Kamran Akmal, they have Abdullah Shafiq in form. Although Kamran Akmal didn't score much, but
He's a dangerous player. But apart from that, no one really threatens the opposition. This is good stuff from Wahab and good stuff from Rizwan as well, making sure that the field is inside the circle, creep in. No singles on offer, closing this game out even in the 19th over. Wahab is very, very difficult, especially when the tail ender is on strike. Just down the leg side, very close to the leg stump, but given wide. Somehow CP needs to get 8 more runs or 6 more runs in this over. At least 8 maybe. You never know in the last over. Looks tough, but they should not give it up. They should get close. He walks across the stumps. He's still struggling to get that single away. This time the ball just bounced over the stump, so no chance of a wide either. What he will do now is tough because he wants Saad Naseem to be on the strike, but last 2 balls he'll probably try and hit one boundary. Just chance your luck. He'll have to really, because you can't leave 30 runs in the final over. You'll have to take a risk here, try and swing from the hip, get an edge, maybe get a boundary somewhere, because the single option hasn't worked for the first 5 deliveries. Yeah, Saad Naseem has just signaled Ahmed Bashir to just block this one. He just probably want to take the strike and get close to the score somehow. $19 gone, it's 149 for 9. Required of the last 6 deliveries. KP have closed the game out, courtesy skillful bowling, especially from the faster men. Last over. Yeah, it's interesting option. Rizwan going Iftikhar, and he's going seam up. He bowled seam up in the 4-day game we played in England, and it was a seaming track, and he made it really hard work. Myself and Babar was playing, and he was all over us because of his lack of his pace, and he was swinging it around. But this is not England. Starts off with a dot ball. So now it's all about hitting 6s. 5 in a row, and Saad Naseem will become a hero. Iftikhar would keep the ball nice and full. And knocks him over. The Yorker worked, and a clinical performance from KP. Win this game comfortably. 4th win in a row. 29 runs. Iftikhar finishes the game off with a Yorker that dismisses the captain. Central Punjab
come to another defeat, but it was the superior bowling attack in the end that prevailed. Yorker right on off stump, maybe a little bit of reverse, but it doesn't really matter because it was a tough ask for Saad Wasim anyway. So KP, as expected before the tournament, were one of the stronger bowling units, and they've come to the party after a poor first game. Today they worked out the conditions very quickly. Got to 178 and then managed to, in the end, comfortably defend that. Central Punjab will now have one eye on the points table because they've slipped behind big time. KP on the other hand, well, they've found form. They finished the Multan leg on a high. They go to Rawalpindi with consecutive victories, well, 4 consecutive victories under their belt. And you would expect now that come Pindi, KP will be qualifying for the semi-finals. So KP won the toss and elected to bat. They got 178. Central Punjab couldn't chase that down. 149 in the end. Kamran Akmal and Abdullah Shafiq threatened, but the quality in bowling was such that they were never in the hunt in the back end. The bowling, as expected, was spot on. Asif Afridi got a couple of wickets, bowled tightly with left arm spin, but then the paces really turned the screw. 2 for Junaid, 2 for Arshad Iqbal, and 2 for Wahab Riaz. Shoaib Malik got that important wicket of Kamran Akmal, which all meant that the strength in bowling of KP was just too much for Central Punjab. Bowled out for 149. Fakhr Zaman got 66, Shoaib Malik 27 not out, and 178 for 7. And Central Punjab then got bowled out for 149. Kamran Akmal with 47, Abdullah Shafiq with 43. The bowlers all did magnificently for KP, and KP won the game by 29 runs. And we'll be back shortly with the presentation. हेलो आवाज़ आ रही है सही है हेलो साकिब भाई आ रहा माइक ओके हेलो चेक चेक साकिब भाई आ रहा है माइक आ रहा है ये फिर शो में दिखेगा दब के खराब हो जाएगा ठीक है बेहतर है हाँ बस छोड़ दे बेहतर है 19-20 बेहतर है बुरा नहीं लग रहा पहले बहुत बुरा लग रहा था Yeah, I can.